Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read this part 4 suspension. Okay, so let's begin this. Rule तो that's it's given there, but इसका इससे जो है काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. So we will read this suspension. कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं किस किस तरीके से. सबसे पहले बात करते हैं कि सस्पेंशन का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंशन. देखिए अकॉर्डिंग टू देखिए सस्पेंशन मतलब होता है कोई भी एक्शन ऑफ सस्पेंडिंग और कंडीशन ऑफ बीइंग सस्पेंडेड, द एक्शन ऑफ डिबारिंग, बेसिकली द एक्शन ऑफ डिबारिंग और स्टेट ऑफ डिबार स्पेशली फॉर अ टाइम, फॉर अ फंक्शन और प्रिविलेज टेम्पररी deprivation ऑफ वंस ऑफिस. ठीक है, बेसिकली द एक्शन ऑफ डिबारिंग समवन. ठीक है, और बेसिकली फ्रॉम अ फंक्शन और प्रिविलेज टेम्पररी deprivation ऑफ वंस ऑफिस. इट्स टेम्पररी डिप्राइवेशन होता है ये. ठीक है, दैट्स कॉल्ड सस्पेंशन. तो सस्पेंशन क्या है, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है. ठीक है, वेयर बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज केप्ट आउट ऑफ टेम्पररी पेंडिंग फाइनल एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट हिम फॉर एक्ट्स ऑफ इनडिसिप्लिन या डेलिक्वेंसी या मिसडिमिनर. कोई भी एक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट किया जाता है. When allegations of serious nature are received against a government servant and it is decided to institute inquiries into such allegations, disciplinary must be considered to have been started against him, and pending such an inquiry, the officer concerned can be suspended as a first step. ठीक है, जब भी पेंडिंग जो है आपके ऊपर कोई भी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट होती है. ठीक है, स्टार्टेड अगेंस्ट हिम एंड पेंडिंग सच एन इंक्वायरी, उसके अगेंस्ट इंक्वायरी जो है पेंडिंग होती है, तो ही कैन बी सस्पेंडेड एज अ फर्स्ट स्टेप इवन बिफोर एनी चार्जेस आर फ्रेम अगेंस्ट हिम. मतलब कुछ भी कोई भी चार्जेस उसके अगेंस्ट में फ्रेम किया है उससे भी पहले, बिफोर एनी चार्जेस आर फ्रेम अगेंस्ट हिम, उससे पहले उनको क्या कर दिया जाता है, जो है सस्पेंड कर दिया जाता है. सस्पेंशन पेंडिंग डिपार्टमेंट इंक्वायरी इज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट. देखिए पूरा नाम दिया है उन्होंने, सस्पेंशन पेंडिंग डिपार्टमेंट इंक्वायरी इज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट इंटरफेयरिंग विद द हैम्परिंग. ये किया क्यों जाता है, दैट इज अ सेफ गार्ड है बेसिकली. ठीक है, ताकि जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट है, ताकि वो इंटरफेयर ना कर सके और हैम्पर ना कर सके कोई भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को, एंड टेम्परिंग विद द मेटेरियल एविडेंस को. ओरल और डॉक्यूमेंट्री कोई भी टाइप के हो तो इस तरीके को उसको वो टेम्पर ना करे, वो हैम्पर ना करे, तो इसलिए जो है उनको सस्पेंड किया जाता है. इन केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सच चार्जेस यूजली इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड. ठीक है, it would not be proper to allow the person concerned to work as a public servant unless there are exceptional reason for not resorting to suspension. Okay, and especially in case of involvement of criminal proceedings की बात करें. ठीक है, सच चार्ज इन्वॉल्व ये क्या है, इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड. मोरल टर्पिट्यूड की बात आ जाती है इसके अंदर. एंड इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू अलाउ एनीवन to work as a public servant unless there are exceptional reason for not resorting to suspension. Suspension is also ordered as a deterrent. It is also ordered as a deterrent to exhibit the firm determination of the government to root out corruption. ठीक है, तरीके से टू रूट आउट करप्शन और टू ग्रेव मिसकंडक्ट. ये इसलिए भी किया जाता है ताकि ये एग्जिबिट कर सके. ठीक है, टू एग्जिबिट द फर्म डिटर्मिनेशन की, जो गवर्नमेंट की जो है पूरी डिटर्मिनेशन है कि उनको करप्शन आउट करना है, और ग्रेव जो भी अदर ग्रेव मिसकंडक्ट है उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं, मतलब गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं सुनना चाहती. सो इंसिडेंटली सस्पेंशन प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट सर्वेंट विद इनफ टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ एडिक्वेटली फॉर द इंक्वायरी एंड टू क्लियर हिमसेल्फ ऑफ द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम. जो भी उनके चार्जेस दिया था उसके अगेंस्ट में वो उसको उनसे बरी हो सकते हैं, उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है व्हेन ही सस्पेंडेड. सो इफेक्ट बोलता है ऐसा क्या है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट पुट एन एंड हिज सर्विस अंडर द गवर्नमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी पर्सन जो है अगर सस्पेंड होता है, ठीक है, अगर कोई भी सस्पेंड है, दैट डज नॉट पुट एन एंड टू हिज सर्विस अंडर द गवर्नमेंट. उसकी सर्विसेज खत्म नहीं होती हैं. The law is settled on the point that suspension pending departmental inquiry against a government servant is not a punishment, and it is not a punishment. ये भी याद रखिएगा. And does not amount to reduced in rank. And इससे जो है आप जो उसको reduce in rank नहीं कर सकते, in the sense that the term is used in article 311 of the 21 of the constitution. ठीक है, reduced in rank मतलब जिस जिस तरीके से आर्टिकल 311 के अंदर यूज़ किया गया है ना, उस तरीके से आपको इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है. ठीक है, Article 10, no person who is a member of a civil service of the union or all India service holds a civil post under the union and shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that which by which he was appointed. ठीक है, तो यहाँ पर ये डिसमिसल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, यही कह रहे हैं. यहाँ पर ये जो 301(2) के अंदर जो डेफिनेशन दे रखा है, इट इज़ नॉट अ पनिशमेंट. ठीक है,
Suspension is not a punishment and does not put an end his service under the government. Okay, next है does not amount to reduce in rank in the sense the term is used in Article 3(1) of the 2. Okay, though suspension is in itself not a form of penalty, though it is not a form of penalty, it definitely constitutes a great hardship for the affected government servant in that apart from not being allowed to perform legitimate duties and earn his salary, he paid reduced rates during the suspension and thus affects his injuriously. उसको बहुत ज़्यादा affect किया था. तो ये कहता है दो जो suspension जो है itself is not a form of penalty. तो जो है it is not a form of penalty, but it definitely constitutes hardships. ठीक है? Because he is not allowed to perform legitimate duties and earn his salary, as well as he is uh, he is paid reduced rates during the period. ठीक है? सेकंड रुकिएगा. All right. Suspension जो है that may also cause a lasting damage to the government servant's reputation. हाँ ये कहीं ना कहीं है कि it may cause, suspension जो है that may cause a lasting damage to his reputation and its stigma is not really washed away even if he is ultimately exonerated or awarded only a minor penalty या reinstate किया जाता है. ठीक है, तब भी वो कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन तो उनकी थोड़ी सी धूमिल हो जाती है. During the period of suspension, the relationship of martyr and servant does not cease. Yeah, it is not correct to state that because of the order of suspension, the government servant concerned ceases to be a member of the service. He continues to be subject to the same discipline and penalties, and the conduct rules continue to apply to him. He cannot supplement his subsistence allowance. He cannot supplement, okay, his subsistence allowance, which is only a portion of his emoluments, by engaging himself in any other employment, business, provision. He cannot supplement his जो उसको subsistence allowance दिया जाता है ना, which is only a portion of his emoluments, by engaging himself in any other department, business या profession. वो ऐसा नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है कि अब उनको यहाँ से आधी सैलरी मिल रही है तो कहीं और जाके एम्प्लॉयमेंट ले लिया और वहां से जो है अपना सैलरी पूरा कर रहा है. नो, ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है. He continues to remain bound to follow the lawful directions of the superiors during the period of suspension, just in the same manner as he was bound to do before suspension. The suspended government servant retains a lien on the permanent post. ठीक है, he actually retains a lien, ताकि वो कभी भी जो है आ सकते हैं. So basically, suspended जो government servant है, he retains a lien on the permanent post held by him substantively at the time of suspension. He continued to be in the grade held by him. ठीक है, and he continues to be in the grade held by him immediately before suspension. He does not suffer a reduction in rank, and he does not suffer a reduction in rank. ठीक है, तो लीगल पोजीशन क्या है इसकी? देखिए, आर्टिकल 3(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एप्लीकेबल टू एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन. ये बात रखिए. नॉर एनी rule provides that opportunity need to be afforded to a government servant to explain the circumstance on the basis of which he is sought to be suspended. ठीक है, तो आर्टिकल जो 3(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने देखा जैसे इसके बारे में देखिए. ठीक है, कहता है दैट नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और एन ऑल इंडिया सर्विस और अ सिविल सर्विस और ऑफ अ स्टेट होल्ड अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. मतलब उसके अलावा उनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता. तो आर्टिकल 3(1) कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल टू एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन. मतलब नोर एनी रूल प्रोवाइड्स दैट अपॉर्चुनिटी नीड बी अफोर्डेड nor any rule provides that opportunity need be afforded to a government servant to explain the circumstances on the basis of which he is sought to be suspended. On the basis of which he is sought to be suspended. Okay, क्या कहना चाह रहे हैं? ये आर्टिकल 3(1) लीगल पोजीशन बता रहे हैं. आर्टिकल 3(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल टू एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन. ओके, ये कह रहा है आर्टिकल जो 3(1) है इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन. नोर एनी रूल प्रोवाइड्स दैट अपॉर्चुनिटी provide that opportunity need be afforded provides that opportunity need be afforded government servant to explain the circumstances on the basis of he was sought to be suspended. Any rule provides that opportunity be afforded to a government servant to suspend. आर्टिकल जो 3(1) है ये तो ये कह रहा है कि कोई भी जो है जैसे नो मेंबर या फिर
dismissed oblique removed by authority appointing subordinate. Okay. So that the rule expressly provides for suspension of a government servant for purpose of disciplinary action. Uh, government servant for purpose of disciplinary action. So that the rule expressly provides that for suspension of government servant for the purpose of disciplinary action. ठीक है? Nobody can seriously doubt the importance and necessity of proper disciplinary action being taken against government servant for inefficiency. Nobody can seriously doubt the importance and necessity of a proper disciplinary action being taken against government servant dishonesty and other suitable reasons. It has been held that though such action is certainly against the interest of the government servant concerned, it is absolutely necessary in the interest of the general public for serving whose interest for the government servant machinery exists and functions. Only when serious imputations are made against the conduct of an officer, only when serious imputations are made against the conduct of an officer, the disciplinary authority cannot immediately drop the charges. When serious imputations are made against the conduct of an officer, तो जो भी disciplinary authority है ना, disciplinary authority cannot immediately drop the charges as the allegations, as the allegations have to be gone into thoroughly. It has been held that if the disciplinary authority, while taking note of serious allegations of misconduct against a government servant, his opinion against some preliminary inquiries, that the uh, circumstances of the case justify further investigation to be made before definite charges can be framed. And in the meanwhile, it would not be proper to allow the officer concerned to function in the ordinary way. It would not be improper to remove the government servant concerned from the sphere of his activity by resorting to immediate suspension. Okay. It would not be improper to remove the government servant concerned from the sphere of his activity by resorting to immediate suspension. It is, however, imperative that the utmost caution and circumspection is to be exercised in passing the order of suspension, resulting in grave consequences of the government servant concerned. It is also necessary to remember that the power of suspension is to be sparingly exercised and not only for valid reasons and not extraneous consideration. When suspended is कब करना है आपको? Government of servant may be placed under suspension under Rule 10(1). Under Rule 10(1) के अंडर में of the rules and regulations in the following circumstances when a disciplinary authority against him is contemplated or is pending. जब भी उसके अगेंस्ट में कोई भी डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग है अगेंस्ट हिम इज कंटेम्प्टेड या तो करी जा रही है या फिर पेंडिंग है, ठीक है. व्हेन केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जब भी उसके अगेंस्ट में कोई भी एक केस है against him in criminal offense is under investigation and inquiry or trial, when in the opinion of the competent authority he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security. Okay, जब भी competent authority का ये opinion होता है that he has engaged himself in the activities of that he has engaged in the activities prejudicial to the interest of security of the state, तो ये 3 केसेस हैं जिनके अंदर जो है सस्पेंशन किया जा सकता है. जब भी कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ चल रही हो, जब भी इन केस में बोला उन्होंने, जब भी कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही हो, व्हेन अ केस अगेंस्ट हिम, जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस का कोई भी केस है उसके अगेंस्ट चल रहा हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, या फिर जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उनका ओपिनियन हो कि जो इन्होंने प्रेजुडिशियल जो भी कोई एक्टिविटी ऐसी की है जो कि इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट में है, ठीक है. Suspension can be ordered when following a preliminary inquiry the competent authority satisfies that a prima facie case has been made out for department proceedings. Framing a definite charges for communication and thereof to the officer concerned is not a condition precedent. देखिए सस्पेंशन जो है दैट कैन बी ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर की जा सकती है व्हेन अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी द कंप्यूटर, जब भी जो कंप्यूटर अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई हो जाता है दैट अ प्राइमरी फेसी केस हैज बीन मेड आउट फॉर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, में जो है सस्पेंशन जो है दैट कैन बी ऑर्डर्ड, ठीक है. फ्रेमिंग ऑफ डेफिनेट चार्जेस एंड कम्युनिकेशन देयर ऑफ द ऑफिसर कंसर्न इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट. ऐसा नहीं है कि आपको पहले उनको बताना, दैट इज नॉट अ कंसीडर्ड प्रेसिडेंट, ठीक है, कि आप पहले चार्ज करेंगे और या पहले उनको कम्युनिकेट करेंगे उनको, ये दैट इज नॉट अ कंसीडर्ड, ये पहली कंडीशन नहीं है, याद रखना है, ठीक है. इस चीज़ को पहले उनको बताना नहीं है, पहले उनके ऊपर हमें जो है अगर जो भी कंपेटेंट अथॉरिटी है उनको लगता है कि हाँ
प्राइमा फेसी लग रहा है उनको इस तरीके से, तो फिर वो सस्पेंशन का केस जो है उनको सीधे सीधा सस्पेंड कर सकते हैं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड ऑन अ क्रिमिनल चार्ज, स्पेशली देखिए जब भी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जब भी कोई भी क्रिमिनल चार्ज जो है चलाए जाते हैं, ठीक है, बट हु इज नॉट एक्चुअली डिटेन इन कस्टडी, क्रिमिनल चार्ज चला गया, तो क्या किया गया है के अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग्स जो चल गई हैं, प्रोसीडिंग्स चली गई हैं, प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएट हो गई है ऑन अ क्रिमिनल चार्ज, बट हु इज नॉट एक्चुअली डिटेन्ड इन कस्टडी, एग्जांपल अ पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल, वो जो है डिटेन नहीं है, वो जेल में नहीं है, ठीक है, मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन अंडर क्लोज बी, तो क्या है, मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन अंडर क्लोज बी ऑफ रूल 10(1), ठीक है। इफ द चार्ज, अब 10(1)(b) देखिए, ये साथ साथ में आपको पता चलना चाहिए यहाँ पर कि 10(1)(a) क्या कह रहा है। 10(1)(1) बोलता है कि द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबॉर्डिनेट और द डिसिप्लिन अथॉरिटी, और कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो, ठीक है, या फिर कोई भी अथॉरिटी जो कि उससे सबॉर्डिनेट है, ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट है, या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट बाय जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर, तो वो जो है गवर्नमेंट पुलिस सर्वेंट को सस्पेंड कर सकती है। वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्प्टेबल, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी ऑफिसर ही इज एंगेज हिमसेल्फ इन स्टेट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, और जहां पर जो है क्रिमिनल ऑफेंस हो, ठीक है। तो ये तीन चीज दे रखी है आपको। जो पार्ट है इसको आप ए ले लीजिए एक तरीके से, ये रूल का ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका। फिर बोलता है प्रोवाइड दैट एक्सेप्ट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड बाय सीएजी, ठीक है, तो जनरल असिस्टेंट जनरल इन रिगार्ड टू अ मेंबर ऑफ इंडियन अकाउंट और अकाउंट सर्विसेज इन द रिगार्ड टू असिस्टेंट और इक्विवेलेंट अदर देन रेगुलर मेंबर ऑफ द इंडियन ऑडिट सर्विसेज, ठीक है, ये इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, फिर ये अदर देन रेगुलर मेंबर क्यों कह रहे हैं यहाँ पे देखें, इन टू अ मेंबर ऑफ इंडियन अकाउंट सर्विस इन रिगार्ड टू असिस्टेंट अकाउंट जनरल और equivalent or other than a regular member of the where the order suspension is made by an authority lower than the, अच्छा इनके केस में कर सकते हैं, रेगुलर मेंबर के केस में कर सकते हैं, where the order of suspension is made by an authority lowering than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstance in which the order was made, ठीक है, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made, ठीक है। तो उनको क्या है बताना है, वेयर द ऑर्डर सस्पेंड इज मेड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सच अथॉरिटी शैल फोर्थविथ रिपोर्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच द ऑर्डर वाज मेड, ठीक है, वो बताएगा उनको। तो यहाँ पर ये बता आपका कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है आगे जिसके अगेंस्ट में प्रोसेसिंग चल रखी है, इनिशिएट किया जाती है क्रिमिनल चार्ज के बेसिस पर, हु इज नॉट एक्चुअली डिटेन, जो मान लीजिए बेल पर है, मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन अंडर 10(1)(b) का, ठीक है, इसके अगेंस्ट में आप कर सकते हो ये, ठीक है। इसके अलावा है इफ द चार्ज इज कनेक्टेड विद द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और इन्वॉल्व्स इन मोरल टर्पीडो पार्ट, इज टू बी ऑर्डर अंडर द रूल अनलेस देयर इन एक्सेप्शन नॉट अडॉप्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर मोरल टर्पिट्यूड का मतलब मीनिंग देख लेते हैं एक बार क्या है इसका। मोरल टर्पिट्यूड an act or behavior that gravely violates the sentiment or accepted standard of the community, ठीक है, moral turpitude, okay, नैतिक अधमता, भाई इंग्लिश पढ़ाई ठीक था यार। तो moral turpitude की जहाँ पर बात आती है, if the church is connected with the office of the government servant, it must involve any moral turpitude on his part. Suspension is to be ordered under this rule, unless there are exception reasons for not adopting, ठीक है, जो है आप moral turpitude के बारे में बता देना है यहाँ पर। Behavior gravely violates the sentiment, ठीक है, फिर उसका इमोरल बिहेवियर हो गया, डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड ऑन अ क्रिमिनल चार्ज बट हु इज नॉट एक्चुअली डिटेन इन कस्टडी, तो उसके में उसको सस्पेंड कर सकते हैं इफ द चार्ज इज कनेक्टेड विद द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड और इन्वॉल्व्स मोरल टर्पिट्यूड ऑन हिज पार्ट, सस्पेंशन इज टू बी ऑर्डर्ड अंडर
rule unless there are exceptional reasons for not ordering this course. ठीक है. Even in cases where any criminal offense is under investigation by the police or under inquiry, the government servant concerned may be placed under suspension. जो भी अगर मान लीजिए कहीं पर भी क्रिमिनल ऑफेंस वेयर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, ठीक है, द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न में भी प्लेस बाय द पुलिस और अंडर इंक्वायरी, जैसे मान लीजिए कहीं पर पुलिस के द्वारा जो है कोई भी केस जो है क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहा है, अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, तब भी उसको आप सस्पेंशन कर सकते हो. गवर्नमेंट कंसर्न में भी प्लेस अंडर सस्पेंशन. ठीक है. अगर आपके अगेंस्ट मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन भी अगर शुरू हो जाती है तो इस केस में भी आप द गवर्नमेंट सर्वेंट हाउएवर स्टैंड्स चार्ज्ड विद एनी ऑफेंस only when after completing such investigation the police files a charge sheet against him before a criminal court and the criminal court takes cognizance of the offense. ठीक है. वो स्टैंड चार्ज कब आएगा? स्टैंड चार्ज तब आएगा जब ऑफेंस द पुलिस फाइल्स अ चार्ज शीट, ठीक है, अगेंस्ट हिम बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑफेंस, तब वो स्टैंड चार्ज होगा. अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है मे आल्सो बी सस्पेंडेड इन केसेस in which the appellate or the reviewing authority, while settling aside the orders imposing the penalty or dismissal, removal, or compulsory retirement, directs that a de novo inquiry should be held, or that steps from a particular stage in the proceedings should be taken against and again, and consider that he should be placed under suspension even if he was not suspended previously. This may be done even if the appellate authority or reviewing authority had not given any direction that the government servant should be suspended. ठीक है. यहाँ पर एक ये डी नोवो कह रहे हैं, एक वर्ड आया आपका डी नोवो, वो मतलब शुरू से, जो मतलब होता है अन्यू, अफ्रेश. तो डी नोवो इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं आप एक तरीके से अफ्रेश. ये कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको अगर सस्पेंड मे बी वो आल्सो बी सस्पेंडेड इन केस इन विच द अपील अथॉरिटी और द रिव्यूइंग अथॉरिटी है वाइल सेटलिंग अराउंड द ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी. ठीक है. अगर मान लीजिए कोई वो है जो है सेटिंग असाइड द ऑर्डर, सेट असाइड कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर को इम्पोजिंग द पेनल्टी और डिसमोसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, डायरेक्ट दैट डी नोवो इंक्वायरी शुड बी हेल्ड while setting aside the order. Is setting aside the order, setting aside a government servant will suspended may also be suspended in which the appellate या फिर appellate authority या फिर reviewing authority है while setting aside the order imposing the penalty of dismissal, this directs, अगर वो खुद से डायरेक्ट कर दे that a de novo inquiry be held and that steps from particular stage in the process should be taken again and हाँ ठीक है टेकन अगेन. हाँ अगर डायरेक्ट ही कर दिया फिर तो बात ही खत्म होगी ना. उन्होंने तो आप कर रहे हैं सेट असाइड कर रहे हैं, अगर उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि नहीं इसको आप सस्पेंशन में डालो, then consider that he should be placed in suspension even if he was not suspended. This may be done even if the appellate or reviewing authority had not, even if they had not given any direction that the government servant should be suspended. ये तब भी किया जा सकता है. This may be done. ठीक है. When suspension should not be resorted to, कब सस्पेंशन जो है नहीं करना चाहिए, तो बोलता है आइटम 6 जो है, आइटम 6 ब्रॉडली इंडिकेट द सर्कमस्टांसेस. आइटम गाइडिंग प्रिंसिपल्स कुछ दे रखे हैं, देख लेते हैं क्या है. Broadly indicated circumstances suspension can be resorted to. An order of suspension should not be made in a perfunctory or in a routine or a casual manner. ठीक है. ठीक है. It should not be made an order of suspension जो है ना should not be made in a routine or casual manner without proper regard to the guiding principles and where no public interest is likely to be served. It is needless to emphasize that the power in this regard is exercised sparingly. Okay. The power जो है in this regard is exercised sparingly with care and caution and only when it is absolutely essential. Suspension should not be resorted to or for petty offences unrelated to morality or the official. ये बताया गया है that suspension जो है ना should not be resorted to for petty offences unrelated to morality or the official duties of the government servant. ठीक है. तो कोई भी जो है सस्पेंशन जो है should not be resorted, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, especially when they are नॉट रिलेटेड टू फॉर पेटी ऑफेंसेस. अगर कोई पेटी ऑफेंसेस है या फिर अनरिलेटेड टू मोरालिटी है और दी ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो तब नहीं करना चाहिए. whenever a government servant continues to remain absent from duty or without permission or his movement are not known, he should be placed under suspension. ठीक है. एक और कंडीशन दिया इन्होंने, जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है ही कंटिन्यूज टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है, और या फिर ओवर स्टेज करता है लीव विदाउट परमिशन, ठीक है, और हिज मूवमेंट्स आर नोट नोन, उसकी मूवमेंट जो है पता नहीं है, तो ही शैल नॉट बी प्लेस्ड. कहते हैं कि he shall not be, okay, he shall not be placed under suspension. As this would entail payment of subsistence allowance as against treating the period of absence as diurnal. ठीक है. इसका रीजन भी इन्होंने बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन जो है कंटिन्यू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी
ओवरस्टे कर लेता है विदाउट परमिशन, या फिर हिज मूवमेंट आर नॉट नोन सस्पेंशन, देखिए दिस वुड क्या होगा, दिस वुड एंटेल पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, आप उनको दिया जाएगा ना सब्सिस्टेंस अलाउंस एज अगेंस्ट ट्रीटिंग द पीरियड एज एब्सेंस ऑफ डायजनल, ठीक है, एज अगेंस्ट कि हम वो पीरियड उसको डायजनल भी नहीं कर सकते फिर, बट व्हेन एन ऑफिशियल who is under suspension disappears and cannot be contacted at his last known address, the suspension order should be lifted and proceedings initiated for removal in absentia, वो उसके ऊपर चला देनी चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि जब भी when an official who is under suspension disappears and cannot be contacted at last address, तो suspension order should be lifted and proceedings initiated for the removal in absentia, वो चला देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोलते हैं रिमूवल इन एब्सेंटिया, एब्सेंटिया मतलब रिमूवल इन एब्सेंट means an order of removal in absentia is very powerful. When ICE officers find you, you will be taken into custody and deported from US without any hearing before a judge. Okay? And of removal in absentia मतलब immigration ऐसे जो है proceeding for is removal in absentia. इसको the foreign national does not appear for a removal hearing as required by the an order that they can be deported from the US even though they never appeared in court, and as long as they received written notice of hearing, they can be deported from the US. Okay? तो जो है यहाँ पर रिमूवल इन एब्सेंटिया का मतलब है कि आपको पेश करना बस। अब गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रही है रिगार्डिंग क्या है गाइडिंग प्रिंसिपल्स है मतलब वाइल पब्लिक इंटरेस्ट इज टू बी द गाइडिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग अ प्लेस गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वाइल पब्लिक इंटरेस्ट जो मेन है ना गाइडिंग फैक्टर क्या है आपका वो पब्लिक इंटरेस्ट है वाइल पब्लिक इंटरेस्ट जो है दैट इज द गाइडिंग फैक्टर दैट इज द गाइडिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग टू प्लेस under suspension. The competent authority should take all factors into account and exercise his care while taking such, even when the matter is under investigation. The prima facie following circumstances may be considered to appropriate. ठीक है तो कुछ circumstances हैं जैसे आप जो है considered to when his where his continuance in service will prejudice investigation, okay, or trial, any equivalent tampering with witnesses, है ना इसका आपको लगता है कि अगर वो कंटिन्यू ऑफिस में रहता है तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं वेयर इज कंटिन्यूस इज लाइकली टू सीरियसली सबवर्ट डिसिप्लिन, ठीक है, सीरियसली सबवर्ट डिसिप्लिन जो है कंटिन्यूस ऑफिस जो है अगर आपको वेयर हिज कंटिन्यूस इन ऑफिस विल बी अगेंस्ट द वाइडर पब्लिक, अगेंस्ट वाइडर पब्लिक सो दैट इज देयर इज अ पब्लिक स्कैंडल, देयर इज अ पब्लिक स्कैंडल एंड इज द गवर्नमेंट ऑफिस इन्वॉल्व करप्शन क्या कर रहा है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिवील्ड अ प्राइम फेस, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई दैट प्राइम फेस जस्टिफाइंग द क्राइम, अगर प्राइम ये जस्टिफाई कर देता है इंक्वायरी आपकी वो जस्टिफाई डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स आर लाइकली टू लीड हिज कन्विक्शन जो है लीड टू हिज डिसमिसल रिटायरमेंट कर सकते हैं वेयर ही सस्पेक्टेड टू हैव एंगेज्ड हिमसेल्फ हिज प्रेजुडिशियल स्टेट, यहाँ पर यह सस्पेक्ट किया जाता है दैट ही एंगेज्ड हिमसेल्फ द एक्टिविटीज इज प्रेजुडिशियल टू द इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट ही है तो उस आप उसको, ठीक है, ये आपका रूल भी कहता है दैट सर्टेन टाइप्स ऑफ मिसडिमिनर वेयर सस्पेंशन में बी डिजायरेबल इन फॉर इंडिकेटेड और कंडक्ट इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, हाँ मोरल टर्पिट्यूड आ गया उठा के सस्पेंड मोरल आ गया ना वहाँ आप सस्पेंड कर सकते हैं। करप्शन की बात आई करप्शन में सब गवर्नमेंट फंड मिसयूज ऑफ पावर्स और पर्सनल ये सब कुछ
सीरियस नेग्लिजेंस और रिजल्टिंग लॉस टू गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस कर दिया, डायरेक्शन आपने किया इसकी वजह से, और डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी को छोड़ के जाना भी है, एंड refusal or deliberate failure to carry out written orders of superior officer, refusal or deliberate failure to carry out written orders of superiors, तो भी आपका क्या है, आपका certain types of misdemeanors desirable in the, यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिजायरेबल है, इन केसेस के अंदर ना डिजायरेबल है, और लिखा है डिजायरेबल, और यहाँ पर लिखा गया कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, तो होना चाहिए। करप्शन वगैरह है केस में, मॉरल negligence, dereliction of duty, desertion of duty, or even refusal of deliberate failure to carry out written orders of superior officer, तो उस केस में भी आपका ये होगा। इन केस ऑफ टाइप 3, 4 और टाइप 5, दैट इज, क्या कहता है ये, बोलता है सीरियस नेग्लिजेंस इन डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी है, और बोलता है डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, और फोर रिफ्यूजल टू डेलिबरेट फेलियर carry out written order, and discretion should be exercised with care, as suspension may cause lasting damage to the government servant found guilty of only a minor mistake. Discretion vested in the government care, ठीक है, जो है डिस्क्रिप्शन यूज करनी है आपको, और देखो थर्ड, मतलब while placing an official under suspension, the competent authority should consider whether the purpose cannot be transferring from his post to a post where he may not repeat, ये भी देखना है आपको, अथॉरिटी है उनको should consider whether the purpose cannot be served by transferring the official from his post or influence the investigation, कर सकते हो, any in progress. See, if the official would have to leave that might be due to him, and coming authority that such a step would not be inappropriate, there should be no objection to being granted instead of suspending it. Okay? So if the official would like to have leave that might be due to him, okay? तो मान लीजिए वो चाहता है कि अब एक तरीके से ट्रांसफर भी कर, और that might be due to him, तो वो पर्सन जो है लीव पे जाना चाहते हैं, जो लीव है जाना चाहते हैं, that डीम्ड सस्पेंशन होता है, केसेस के अंदर आता है कि आप डीम्ड सस्पेंड हो गए। डीम्ड सस्पेंशन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। पॉइंट नंबर 2 है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो बोलते हैं यही वही बोला गया, वायलेंट सर्विस अंडर रूल 10(2), आपका 10 वाला 2 की, इनका 2 पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या है। There is a government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority with effect from the date of his detention, okay, if his custody whether criminal charge or otherwise for a period exceeding 48 hours ज़्यादा आपकी डिटेंशन हो गई तो यस आप डीम्ड सस्पेंड है विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, जिस डेट से भी आप जो है कन्विक्ट हुए हैं, इफ इन द इवेंट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस ही सेंटेंस टू अ टर्म इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 40, अगर जो भी जिसके लिए भी आप दोषी पाए जाते हैं मान लीजिए, और उसके अंदर आपको 48 आवर्स का टाइम दिया है, 48 से ज़्यादा जो है आपको इम्प्रिजन इज नॉट फोर्स डिसमिड और रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड कॉन्सिक्वेंस, और लेकिन हालांकि उनको क्या है सस्पेंड, उनको जो है डिसमिस्ड या फिर रिमूव नहीं किया था, कंपल्सरी रिटायर नहीं किया गया, so that the period of 48 hours referred to clause B of this rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction, and for this purpose the intermittent period of imprisonment if any shall be taken into account, ठीक है। यहाँ पर ये रूल नंबर 2 बोलता है आपका, इंपॉर्टेंट है यार ये रूल नंबर 2, ठीक है। तो यही आपका है दैट 10 वाले पार्ट में।
that with effect from the date of his conviction, with effect from date of his conviction, if in the event of conviction अगर होता है he is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours and is not forthwith मतलब जो उसको आगे जाके डिसमिस भी नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो वर्ड है फोर्थ विद, ये मैं देखना चाह रहा हूँ, तो क्या है? इमीडिएटली डिस्मिस्ड। यहाँ पर जो फोर्थ विद मतलब इमीडिएटली अगर उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है, ठीक है, रिमूव या कंपल्सरी रिटर्न not with effect from the date of conviction in the event of is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsory retired consequent to such conviction. The period of 48 hours here referred to in clause B of this sub-rule shall be covered for the in commencement of his imprisonment after the conviction. For this purpose, intermediate periods of imprisonment, if any, shall be taken into account. ठीक है, क्या पढ़ते हैं, क्या है इसका? बोलता while in service under rule 10 to CCS a government servant shall be deemed to have been placed under suspension, ठीक है, by an order of appointing authority the following if he is detained, if he is detained in a custody, whether on a criminal charge or for a period exceeding 48 hours, cases of detention in custody under any law providing for preventive detention as a result of prison for will also fall in this category. ठीक है, कह रहा है केसेस ऑफ डिटेंशन कस्टडी वेयर एनी लॉ प्रोवाइडिंग, और अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं ना, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग फॉर अरेस्ट दैट विल आल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। ये इंपॉर्टेंट है, तो डिटेंशन में भी होता है डिटेंशन कस्टडी अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एज अ रिजल्ट और एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग फॉर अरेस्ट फॉर डेट। दो चीज़ें यहाँ पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन आ गया एक तो आपका डिटेंशन हो गया, एक दूसरा आ गया प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर अरेस्ट फॉर डेट। ये तीन चीज़ें हैं, तो इस केस में आपका चला for in the event of conviction for an offense is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours, तो इस केस में भी होगा। अब बोलता है if a government servant who has been detained for a period exceeding 48 hours is later on released on bail, such release will not affect the deemed suspension। ठीक है, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन डिटेन फॉर अ पीरियड ऑफ, अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो डिटेन किया गया, हु हैज बीन फॉर डिटेन फॉर पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, ठीक है, इज लेटर और रिलीज ऑन बेल, लेटर even if he is released on bail, such will not such जो है such release will not affect the deemed suspect, ठीक है, which will continue to be in force until revoked by the competent, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं the period of 48 hours referred to in para 1 category B, 1 का B above, okay, okay, will be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and intermediate period of imprisonment if any will taken into, ठीक है। A duty has been cast on the government servant who is arrested for any reason to intimate promptly the fact of his arrest and the circumstances and therewith to his official service, even though he might have been released on bail subsequently। ठीक है, ये important है। ड्यूटी, ये ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ना टू कास्ट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट arrested who is arrested for any reason to intimate promptly the fact of his arrest and circumstances connected therewith to his official superior, even though he might have been released on bail subsequently। ठीक है, अभी आपको बताना है। फेलियर टू डू सो विल बी रिगार्डेड एज सस्पेंशन ऑफ मटेरियल, अगर आप ऐसा नहीं बताते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज, अगर आप ऐसा नहीं बताते हैं तो रिगार्डेड एज सप्रेशन ऑफ मटेरियल information rendering him into liable to disciplinary action on ground alone apart from the action that can be called for a routine police case against, okay? बोलता है केसेस ऑफ सस्पेंशन जो है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग फॉर अरेस्ट फॉर डेट और ड्यूरिंग डिटेंशन अंडर लॉ प्रोवाइडिंग विल बी डेल्ट इन द फॉलोइंग मैनर। बोलता है अभी किस किस तरीके से इनको डील करना है आपने, केसेस ऑफ सस्पेंशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल पेंडेंसी प्रोसीडिंग्स, अगर मान लीजिए केसेस ऑफ सस्पेंशन ड्यूरिंग पेंडेंसी, अगर आपकी पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, या फिर प्रोसीडिंग फॉर अरेस्ट फॉर डेट,
या फिर प्रोसीडिंग है फॉर अरेस्ट फॉर डेट और ड्यूरिंग डिटेंशन या फिर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो इनको किस तरीके से देखना है आपका? गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिटेन्ड इन कस्टडी अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन or as a result of proceeding either on criminal charge or is arrest for debt. The period of 48 to be deemed to be under suspension, है ना? इस केस में क्या हो जाएगा? वो डीम्ड सस्पेंड माना जाएगा इनको. Okay? If a government servant who is undergoing a sentence of imprisonment pending decision on the disciplinary action to be taken against him, तो वो डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा ऑटोमेटिकली. A government servant against whom a proceeding has been taken on a criminal charge but he is not actually detained in custody, example person released on bail, if the charge is currently with the official position of the government servant tribunal part. ठीक है, तो ये सस्पेंशन अंडर will be placed under suspension under article clause B of 10(1)(b) unless there are an exceptional reason for not. Okay? The official hold और moral turpitude केस आता है ना, उन्होंने criminal charge but who is actually not detained. Will be placed under suspension under clause 10 clause B of 10(1) unless there are exceptional reasons for not adopting this course. ठीक है, a government servant against whom proceeding has been taken for arrest for debt who is not actually detained only if receiving temporary. So the government servant proceeding has been taken for arrest for debt who is not actually detained in custody to be placed under suspension only if a disciplinary proceeding against him is terminated. ठीक है, उस केस में हम बात करते हैं वाइल नॉट इन सर्विस. ए पार्ट था वाइल सर्विस जब पर रहते हैं, जो बी पार्ट है जब सर्विस पर नहीं है. बोलते हैं अंडर रूल 10(3) वेर पेनल्टी 10(3) चल देते हैं, वेर पेनल्टी ऑफ डिसमिसल removal or compulsory retirement from service is imposed upon a government, where a penalty of dismissal, removal, or compulsory retirement imposed upon a government servant under set aside for a government servant set aside in appeal. अगर ये हटा दिया है और review under the case is remitted for further inquiry or action or any other direct order of it be deemed to have been forced, the date of the original order will remain forced. Okay? जहाँ कहीं भी वेयर पेनल्टी ऑफ डिस्पोजल, मान लो आपका पेनल्टी ऑफ डिस्पोजल चल रहा है, आपका रिमूवल को मैं पोस्ट अपॉन गवर्नमेंट सर्वेंट सेट असाइड अपील के अंदर साइड किया गया उसको रिव्यू अंडर दी से मानी. होता है अंडर रूल 10(3) where a penalty of dismissal, removal, or compulsory retirement from service is imposed upon a government servant. Where a penalty of dismissal, removal, or compulsory retirement from the service imposed upon a government servant under suspension is set aside. अगर उसको सेट असाइड कर देना, ठीक है, सेट असाइड इन अपील, ठीक है, और इन रिवर्जन ऑन द केसेस और ऑन रिविजन केस इज रिमिटेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी और अथॉरिटी फॉर फर्दर इंक्वायरी. क्या गया, क्या बोला गया इन्होंने? और रिवाइजिंग अथॉरिटी फॉर फर्दर इंक्वायरी और एक्शन विद द ऑर्डर सस्पेंड टू हैव बीन कंटिन्यूड. ठीक है,
The order of suspension that will be deemed to have been continued in force on from the date of original order of dismissal. ठीक है. Similarly, where there is a this I don't declared and void in consequence of a decision by a court of law. अगर मान लीजिए कि जहाँ पर पेनल्टी और डिसमिसल रिमूवल जो है इस तरीके से इम्पोज ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेट असाइड, ठीक है, और डिक्लेयर्ड वॉइड और रेंडर्ड वॉइड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसीजन बाय कोर्ट ऑफ लॉ ने इसको कर दिया, तो रिकोर्स कैन बी हैड टू रूल 10(4). इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट फर्दर इंक्वायरी कंटिन्यू शुड नॉट बी ऑर्डर्ड एक्सेप्ट इन केस. तो इस केस में क्या है आपका, तो फर्दर इंक्वायरी जो है कंटेम्प्ट दिस रूल शुड नॉट बी ऑर्डर्ड. इट शुड नॉट बी ऑर्डर्ड except in a case where the penalty of dismissal removal has been set aside by the court on law of technical ground. ठीक है, without going into merits of the case when fresh material has come to light, या फिर जब when fresh material has come to light which was not before, a further inquiry into the charges which have not been examined by the court can however be ordered in the dependent authority under this rule depending on facts and case. ठीक है. It may be noted, fourth बोलता है, where a penalty of dismissal, removal from service upon government servants is set aside or declared or rendered void in consequence of a decision of a court or undisciplinary authority or consideration the case decides to hold a further inquiry against him on allegations or penalty on penalty or dismissal was originally imposed the deemed to have been placed under suspension by the government from the date of original order. No servant should be under court has passed. ठीक है. It was according to the wording of the sub-rule 3 and 4 of the rule in which the case falling under the earlier sub-rule of the government should have been under suspension before dismissal. No such condition has been prescribed for a case falling under the later sub-rule. Under the said rule, in such a case, the government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of original order of dismissal. Again, though in all the above type of cases deemed to have continued automatically, issue of formal notification is necessary indicating the specific rule under which the order is issued after satisfying that the condition then not fulfilled. ठीक है. All above cases of suspension deemed to have been continued automatically. And so cases जो suspend deemed to have been continued automatically, but फिर भी issue of formal let order is necessary, ये जरूरी है, indicating the specific rule under which the order is issued. The Supreme Court जो है said that in terms of 10(2) is not restricted of duration or efficiency or the actual to continue operative unless modified revoked. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो the order endurance of 10(2) is not restricted in its point. 10(2) जो है ना deemed to have interest, तो ये जो है is not in the point of duration or efficacy of the actual proof of duration. Only it is continuously operative unless modified or revoked. ठीक है. इस बात करते हैं कंटिन्यूड सस्पेंशन. तो अब इसके आगे आता है आपका कंटिन्यूड सस्पेंशन, मतलब अंडर रूल 10(5) कहता है ये वेयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सब रूल 7. ठीक है, बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन सब रूल 7 एंड ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल shall continue to remain in force until it is modified in sub rule 7. The order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force till modified. Okay? बोलता है 10(5)(b) where a government servant is suspended or is deemed to have been suspended in connection with any disciplinary authority or otherwise, जहाँ पर भी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट जो सस्पेंड कर दिया या फिर डीम टू हैव बीन सस्पेंडेड है एनी डिसिप्लिनरी अदरवाइज, लिखता है whether in connection with any disciplinary proceedings or otherwise any and any other disciplinary proceedings against him during the context of suspension he may for example the termination of all. ठीक है. ठीक है, कोई बंदा पहले से सस्पेंशन में है, बीच में ये अपना जो है अदर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो ये जो है कंटिन्यू रहेगा. ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन में बात करते हैं.
बोलता है अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ओनली बाय अ स्पेसिफिक ऑर्डर इन राइटिंग बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ही कैन बी प्लेस्ड बाय अंडर सस्पेंशन ओनली, ओनली जो है बाय अ स्पेसिफिक ऑर्डर मेड इन राइटिंग बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी, ही शुड नॉट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ओरल ऑर्डर। क्या आप इसको ओरल ऑर्डर से नहीं कर सकते, ही शुड नॉट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ओरल ऑर्डर। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर सस्पेंशन यहाँ दे रखा है। बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन द अथॉरिटी प्रोपोजिंग टू मेक द ऑर्डर शुड वेरीफाई वेदर इट इज कंपेटेंट टू डू, ठीक है। तो जो भी कर रही है, तो अथॉरिटी प्रपोज जो भी कर रही है टू मेक द ऑर्डर शुड वेरीफाई वेदर इट इज कंपेटेंट टू डू सो, क्या वो कंपेटेंट है। अदरवाइज सस्पेंशन ऑर्डर इज लायबल टू बी डिक्लेयर्ड इलीगल, अदरवाइज ये liable to be declared illegal, and in that event government servant have a claim the grant of full pay and allowances for the period of suspension, ठीक है। ठीक है, and the government servant जो है may have a claim the grant of full pay and allowances, अगर मान लीजिए for the period of suspension। इन केस ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, कभी जब भी डीम्ड सस्पेंशन होती है अंडर रूल 2, 3 और 4, सस्पेंशन टेक्स इफेक्ट ऑटोमेटिकली इवन विदाउट अ फॉर्मल ऑर्डर। देखिए यहाँ पर वैसे ऑर्डर की ज़रूरत है, बट जहाँ पर डीम्ड सस्पेंशन की बात आती है, ठीक है, तो सस्पेंशन जो है अंडर दिस 10, 2, 3, 4 टेक्स इफेक्ट ऑटोमेटिकली इवन विदाउट अ फॉर्मल ऑर्डर, दो द वैलिडिटी ऑफ द सस्पेंशन बाई द नॉन इशू स्पेसिफिक ऑर्डर। और जो इसकी वैलिडिटी है ना यार, validity of the suspension is not affected by the non-issue of a specific order of suspension. All the same liable for purpose of a record to make a formal order. A standard format it is not the intention that each word of the form should be strictly adhered to in a date of effect of suspension, except in cases where an employee is deemed to have been placed under suspension only from the date on which it is made or subsequently and not retrospectively, ठीक है। Except in cases in which an employee is deemed to have been placed under suspension, order of suspension can normally take effect। तो यहाँ पर कहता है कि an order of suspension can normally take effect only from the date on which it is made or subsequently or retrospect and not retrospectively। अभी पीछे सस्पेंड नहीं कर सकते आप, हाँ जी 2 महीने पहले सस्पेंड कर दी, retrospectively नहीं होगा। The government servant who is placed under suspension should be simultaneously committed an order, order will be both meaningless and improper। तो retrospective जो order है वो क्या होगा, बिल्कुल meaningless और improper होगा। It has been held that once an order is issued and is set out to the concerned government servant, it must normally be held to have been communicated to him। ठीक है, where however a government servant has performed his prescribed hours of duty on a particular day, suspension can be effective from the subsequent day। Similar is the case in which a government servant is stationed at a place other than where the order is passed. For example, two rows holding charge of the stores, cash, etc. In such cases, effect of taking it the circumstance of each case into consideration, ठीक है। Okay, यार I would like to take a 5 minute break please।
Okay. Now, back it says except in cases, पहले हम पॉइंट नंबर 10 पर हैं, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन की, सस्पेंशन की डेट क्या होगी। बोलता है एक्सेप्ट इन केसेस इन विच एन एम्प्लॉय इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन एंड ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन नॉर्मली टेक इफेक्ट ओनली फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज मेड सब्सिक्वेंटली एंड नॉट रिस्पेक्टेड। देखिए, उन केसेस को छोड़ के जहाँ पर एक एम्प्लॉय को जो है वो डीम्ड सस्पेंडेड जो है ना, उन इन केसेस को छोड़ के ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है वहाँ से इफेक्ट होता है जिस दिन से दिया जाता है, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिवली कभी भी नहीं होता है, ठीक है, वो मीनिंगलेस है, इम्प्रॉपर है। इट हैज़ बीन हेल्ड दैट okay, it has been held that once an order is issued and is sent out to concerned government servant, it must normally be held to have been communicated to him। जैसे ही एक जो ऑर्डर है, an order is issued, एक जो ऑर्डर जो है इशू किया जाता है एंड इज सेंट आउट, जैसे ही भेज दिया जाता है टू द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इट इज टू बी नॉर्मली टू बी हेल्ड हैव बीन कम्युनिकेटेड, तो उसको माना जाएगा कि वो कम्युनिकेट हो चुका है। वेयर हाउएवर गवर्नमेंट सर्वेंट हैज परफॉर्म्ड हिज प्रिस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी, जहाँ पर जो है आपने उसने जो भी ड्यूटी वो किया ऑन ड्यूटी ऑन अ पर्टिकुलर डे, एंड सस्पेंशन कैन बी इफेक्टिव फ्रॉम दी सब्सिक्वेंट डे, तो मान लीजिए उसने 5 से 5:30 ड्यूटी पूरी हुई तो उसके नेक्स्ट दिन से माना जाएगा। सिमिलर इज द केस इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज स्टेशन एट अ प्लेस, फिर मान लीजिए यहाँ पर ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, यहाँ पर भी लिखिएगा, वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट हैज परफॉर्म्ड हिज प्रिस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑन अ पर्टिकुलर डे, सस्पेंशन जो है दैट कैन बी इफेक्टिव फ्रॉम दी सब्सिक्वेंट डे, अगले दिन से माना जाएगा सब्सिक्वेंट डे से। सिमिलरली on a, in a case where a government servant is जो गवर्नमेंट सर्वेंट है स्टेशन एट अ प्लेस अदर देन वेयर द ऑर्डर इज पास, जहाँ ऑर्डर पास हुआ उससे अलग कहीं स्टेशन पर है, और ही इज ऑन अ टूर या फिर कहीं टूर पर है, और ही इज होल्डिंग चार्ज ऑफ स्टोर्स, ठीक है, कैश एटसेट्रा, ठीक है, इन सच केसेस द सस्पेंशन इज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम अ सूटेबल डेट टेकिंग द सर्कमस्टेंस ऑफ ईच इनटू कंसीडर, ठीक है। कहाँ से होगा, ठीक है, सूटेबल डेट से होगा, सूटेबल डेट से। In the case of deemed suspension, this order can be effective from the date of detention in case the detention from exceeding 48 hours, जैसे ही डेट ऑफ डिटेंशन केस में जो भी डिटेंशन की डेट होगी ना, इन केस द डिटेंशन इज फॉर एक्सीडिंग, जैसे 48 आवर्स से ऊपर की डिटेंशन हुई तो जिस दिन डेट से डेट ऑफ डिटेंशन उस दिन से माना जाएगा। डेट ऑफ कन्विक्शन, इन द इवेंट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, जब सेंटेंस जो है एक्सीडिंग, सेंटेंस जो है दैट इज एक्सीडिंग 48 आवर्स, तो वहाँ तब से माना जाएगा। डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट इन केस ऑफ सच पेनल्टी हैव बीन सेट असाइड बाय अपीलेट अथॉरिटी और द कोर्ट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, जो भी डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर होगा ना डिसमिसल का, ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट का, इन केस ऑफ सच पेनल्टी हैव बीन सेट असाइड बाय, अगर वो सेट असाइड कर दी, मान लीजिए सेट असाइड बाय दी अपीलेट अथॉरिटी, इफ इट इज सेट असाइड बाय दी अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, और रिविजन अथॉरिटी और द डिसीजन इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो वहां से तभी सही माना जाएगा जिस दिन से उनका ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल है, ठीक है। In the case where the government servant is already on leave or absent without prior permission and hence not performing any official duties, the order of suspension, if any, should normally be given effect to only from the date that's on the date that government servant returns from leave, ठीक है। देखिए, इन केस द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इज ऑलरेडी ऑन लीव, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो लीव पर है, ठीक है, या फिर एबसेंट है विदाउट प्रायर परमिशन एंड हेंस नॉट परफॉर्मिंग एनी ऑफिशियल ड्यूटीज, द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इन normally given effect to, then it should normally be given effect to only from the date the said government servant returns from leave, जब जिस दिन वो रिटर्न करता है and desires to resume the duty, उस दिन से आपको माना जाएगा। as otherwise the government servant becomes automatically entitled to payment of subsistence allowance for the period of non duty, ठीक है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अदरवाइज जो है, यहाँ पर उन्होंने रीजन भी दिया, बता दिया है, एज अदरवाइज द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है बिकम्स ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ सब्सिडेंस अलाउंस फॉर द पीरियड ऑफ नॉन ड्यूटी। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड टेक द सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस इनटू कंसीडरेशन एंड मेड एट द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। ड्यूरेशन और एंड ऑफ सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या और एंड ऑफ सस्पेंशन क्या होगा। अंडर रूल 10(5)(a), 10(5)(a) की बात करते हैं, ये क्या है 10(5)(a), यही बोलता है दैट सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेंट इन 7 द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड टू डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज मॉडिफाइड और रिवोक्ड ऑन अदर बट टू। तो बोलता है ड्यूरेशन अंडर रूल 10(5)(a) एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज रिवोक्ड, ठीक है। तो अंटिल इट इज रिवोक्ड उसको तब तक उसको माना जाएगा, मेड और डीम टू हैव बीन मेड शैल कंटिन्यू, ये तब तक कंटिन्यू करेगा
until it is revoked by a competent authority, जब तक competent authorities को revoke ना कर दे. An order of suspension ceases to exist automatically from the date from which the government servant is dismissed, removed or compulsory retired as a result of departmental competence. ठीक है, एक जो सस्पेंशन का केस है ना, मान लीजिए, तो टू एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है सीजेज टू एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली, मतलब खत्म हो जाता है कहाँ से, फ्रॉम द डेट फ्रॉम द अगर गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिसमिस कर दिया जाता है, वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाता है, डिसमिस, रिमूव या फिर कंपल्सरी रिटायर कर दिया एज ए रिजल्ट ऑफ डिपार्टमेंटल और कोर्ट प्रोसीडिंग्स और व्हेन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम टर्मिनेट और बाय एक्विटल डिस्चार्ज. ठीक है, दो दो बाय एक्विटल. एक्विटल मतलब होता है आपका सजा होना. एक्विट कर लिया ना उसको, एक्विटल, दोष मोचन. एक्विटल मीनिंग ये नहीं कह रहा है इन इंग्लिश. setting free or deliverance from the charge of an offense by verdict or jury judgment. दोष मोचन, विमुक्ति. यहाँ पर ये एक्विटल क्यों बोल ये कह रहा है यहाँ पर an order of suspension ceases to exist automatically from the date from which the government servant is dismissed, removed or compulsory retired as a result of departmental court proceeding or when the criminal proceeding against him terminate by acquittal or discharge. अच्छा वो charge करे तब भी. Though in the latter type of cases a suspension automatically comes to an end, an express order will be necessary for the but फिर भी उस केस में भी जो है an express order will be necessary for the commander to allow the employee concerned to resume his duties. ठीक है, suspension should not be continued beyond the minimum period for which it is required. Prolonging the continuance of suspension when inquiry is unduly delayed would smack of malafide. ठीक है, यहाँ पर भी हमने पढ़ा है शायद जो सस्पेंशन जो होता है ना, हाँ, तो कब तक कर सकते हैं हम सस्पेंशन, मैक्सिमम ऑफ 6 months. शुरू में जब सस्पेंशन करते हैं तो हमने पढ़ा था कि सस्पेंशन जो है शुरू में वो 90 डेज के अंदर अंदर उस पर कुछ लेना है और 6 महीने के बाद एक बार हम कर सकते हैं. जरूर है, इसके बाद देख लेते हैं एक बार. हाँ ये रहा, बोलता है एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल shall be reviewed shall be reviewed by the authority. जब भी कोई ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है और या फिर डीम सस्पेंशन, दैट शुड बी रिव्यूड बाय द अथॉरिटी व्हिच इज कंपेटेंट टू मॉडिफाई और रिवोक द सस्पेंशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन. ठीक है, 90 दिन से पहले पहले आपको एक बार फिर उसको रिव्यू करना है एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस इधर एक्सटेंड और रिवोकिंग, और एक्सटेंड कर सकते हो उसको आप 180 डेज. ठीक है, ठीक है, इसको आपको रिव्यू करना है विद इन 90 डेज और फिर उसके अंदर आपको कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 180 डेज. ठीक है, follow-up action. As suspension continues great hardship in fairness the government servant to the fairness of the government servant, its period should be reduced to the barest minimum. If suspension is unduly prolonged, it also entails infructuous influence to government by way of paying off subsidies allowance often at the enhanced rate without in any way utilizing his services. The rules of natural justice require that when a government servant is placed under suspension, charges against him should be framed within a reasonable period of time. ठीक है, एंड a final decision taken in terminate suspension to have such case different to state down in case involving criminal person against the government servant. Every effort should be made to complete the investigation and file returns within 3 months from the date of suspension. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि जहाँ पर भी आपकी इन केसेस इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जहाँ पर भी होती है, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, एफर्ट शुड बी मेड टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन and file a charge sheet in a court of law within 3 months. ऑफ द डेट ऑफ सस्पेंशन, 3 महीने के अंदर अंदर आपको कर देना है. ठीक है, जहाँ पर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात होती है वहाँ पर 3 महीने की बात है. इनकेस अदर देन दोज पेंडिंग इन कोर्ट द टोटल पीरियड ऑफ सस्पेंशन विच both in respect of investigation discipline proceedings should not ordinarily exceed 6 months. ठीक है, in cases other than those pending in courts, जो पेंडिंग कोर्ट में पेंडिंग उससे अलग है, द टोटल सस्पेंशन विच तो टोटल पीरियड ऑफ सस्पेंशन विच बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है should not ordinarily
ऑर्डिनरी जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन एक्सेप्शनल सर्कम वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एडिट दिस टर्मिनल, द डिसिप्लिनरी शुड रिपोर्ट द मैटर टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले, ठीक है। और इस केस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एडिट द टाइमलाइंस, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड रिपोर्ट टू द मैटर टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले, ठीक है। ने ऊपर ऊपर उनको बताएंगे अथॉरिटी को। फिर बोलता है दैट द गवर्नमेंट हैव इशूड इंस्ट्रक्शन on all the concerned authorities that they should scrupulously observe the time limit and the review in the cases of suspension to see whether the continued suspension in all the cases is really necessary. The authorities superior to the disciplinary are to exercise a strict check on cases on which delay has occurred and give appropriate direction to the disciplinary authority. Serious notice of the lapse of such authorities in this regard would be taken as a considered in making adverse entries in their. Okay. ये कहते हैं कि serious notice of the lapse of such authorities in this regard would be taken as also considered in making adverse entries in the ACR. उनकी ACR में लिखा जाएगा, एडवर्स एंट्री होगी उनकी ACR में, किन के सीनियर ऑफिसर्स की उसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है द अथॉरिटी सुपीरियर जो भी है टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आर टू एक्सरसाइज a strict check on when delay has occurred and give appropriate directions, ठीक है। इन द कोर्ट केस इट इज इनकम्बेंट ऑन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू मेक arrangement for getting the result very promptly and take action thereafter without delay, or revoke the suspension if it is not decided to continue the same with a review to take further departmental action, ठीक है। फिर बोलते हैं रिव्यू ऑफ सस्पेंशन, क्या हम का रिव्यू भी कर सकते हैं, देखते हैं इसके बारे में। बोलते हैं रूल 10 जो है हैज़ बीन अमेंडेड प्रोवाइडिंग दैट एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन विल बी रिव्यूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। एक सेकंड रुकिएगा। बोलते हैं रिव्यू ऑफ सस्पेंशन, बोलता है रूल 10 जो है हैज़ बीन अमेंडेड प्रोवाइडिंग दैट एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन विल बी रिव्यूड बाय द कंपेटेंट ऑन द रिकमेंडेशन कमेटी। तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है शैल बी रिव्यूड should be reviewed by the competent authority के द्वारा होना चाहिए on the recommendation of the review committee। रिव्यू कमेटी की रेगुलेशन कंसिडर फॉर द पर्पस शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर 90 डेज, क्योंकि जो है आपका जो है फर्दर कोई भी जो एक ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है दैट शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर 90 डेज अनलेस इट इज एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज। The composition of review may be as follows: that the disciplinary authority, the appellate authority, and another officer at the level of disciplinary authority from the same office or from the another central government office in case of another office of same level is not available in the same office in case where the president is not the disciplinary authority or the appellate authority। तो कंपोजिशन ऑफ रिव्यू के अंदर जो है रिव्यू कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे, ठीक है। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा सबसे पहले, द एपलेट अथॉरिटी होगा एंड दी अनदर ऑफिसर ऑफ लेवल ऑफ डिसिप्लिन कहीं फ्रॉम द सेम ऑफिस और फ्रॉम अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। इट्स नॉट इन केस वेयर द प्रेसिडेंट इज नॉट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और द किस केस में बात कर रहे हैं, ये उस केस में बात कर रहे हैं जहाँ पर इन केस वेयर द प्रेसिडेंट इज नॉट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और द एपलेट अथॉरिटी। इन केस में प्रेसिडेंट जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, प्रेसिडेंट इज नॉट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वहाँ पर होगा। The disciplinary authority and two officers of the level of secretary, additional secretary, joint secretary who are equivalent or higher in rank than the disciplinary authority from the same office or in case other than of the same level in case of appellate authority is present। जहाँ पर भी appellate authority present है, अगर where the appellate authority is present, वहाँ पर क्या होगा, where the appellate authority जो है वो प्रेसिडेंट है, उस केस में क्या होगा, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है, एंड टू ऑफिसर्स ऑफ द लेवल ऑफ सेक्रेटरी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद, फिर सेक्रेटरी रैंक के टू ऑफिसर्स एंड दी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के वो आर इक्विवेलेंट और हायर इन रैंक देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फ्रॉम द सेम ऑफिस और फ्रॉम, ठीक है। थ्री ऑफिसर्स ऑफ द लेवल ऑफ सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी हु आर हायर इन रैंक देन द सस्पेंडेड ऑफिशियल फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट और फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट, ठीक है। कहते हैं इन केस वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है अथॉरिटी वहाँ पर प्रेसिडेंट है, इनकी इस केस में क्या होगा, यही तो है थ्री ऑफिसर्स ऑफ द लेवल ऑफ सेक्रेटरी, इसमें अंदर थ्री ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ secretary, additional secretary, joint secretary who are higher in rank than the suspended, who are higher in rank than the suspended officials, okay, from the same department or from other department in case the president, ठीक है। The administration department officer concerned may constitute the review committee as a needed on a permanent basis or on a ऊपर डिपेंड करता है देखो जो that they can make, they may constitute the review committee as a needed on a permanent basis पे बना सकते हैं या फिर ad hoc basis पे बना सकते हैं, इनके ऊपर, ठीक है। वो डिपेंड करता है इनके ऊपर, तो वो परमानेंट भी बना सकते हैं और एडॉक भी बना सकते हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ता है, डिपेंड करता है। द रिव्यू कमेटी मे टेक अ फ्यू
view regarding revocation. Review committee है वो revoke भी कर सकते continuous keeping in such circumstances and the case and taking into account the unduly long suspension while putting the employee concern into undue hardship involving payment of a subsidy without the employee performing any useful service to the government without prejudice to the foregoing if the officer has been under suspension for 1 year without any charges being filed in a court of law without prejudice to the foregoing. You have to do something that you want. बोलता है without prejudice to the foregoing. The officer has been under suspension for 1 year. The officer has been under suspension for 1 year without any charges being filed in a court of law, or no charge memo has been issued. Which charge memo has been issued in a departmental inquiry, he shall ordinarily be reinstated in service. क्या होगा? He shall ordinarily be reinstated in service without prejudice to the case against him. However, in case the officer is in police, judicial custody, or in police if judicial custody or is accused of a serious crime or a matter involving national security, the review committee may recommend the continuous suspension of the official concerned. So without prejudice to the foregoing. If an officer has been under suspension for 1 year, okay? If an officer has been under suspension for 1 year without any charges being filed in a court of law, or no charge memo has been issued in a department of inquiry, he shall only be dismissed in service. Okay? क्या बोलता है that however in case the officer or is accused of a review committee may recommend the officer committee to continue. Okay? Insofar as persons serving in the Indian Armed Services, okay? तो यहाँ पे persons जो हैं serving in departments, these instructions are issued in yeah, and all ministries departments are requested to put above instructions all discipline. Review not necessary in case of continuous detention. So no review of suspension shall be necessary. The government servant continues to be under detention at the time of completion of days. ठीक है? अगर वो 90 दिन से भी ज़्यादा भाई the time of days of suspension and 90 days period for review count from the day कहाँ से शुरू होगा? count count from the date of government service obtained. Custody is released. Release होगा ना? कहाँ से शुरू? For the date on which the fact of his release has no review. कोई रिव्यू की जरूरत नहीं है.
Section regarding timely review of suspension. क्या कहते हैं इसके? It has been brought to the notice of this department that in cases of prompt suspension, the courts have pointed out that suspension cannot be continued for long, and that in spite of the institution that disciplinary authority are not finally dismissed. Yeah. Also in such cases, the government is unnecessarily paying grounds without any work, or if on the culmination, the charged officer is charged. Government servant has to unnecessarily pay the full period of suspension. It is therefore desirable that timely review of. Yeah. Also in such cases, department is and on culmination, charged officer is charges. Government has unnecessarily the full salary and the period of pension on duty. ठीक है, ये बहुत अगर कोई भी चार्ज ऑफिसर जो नोट कर दिया है तो गवर्नमेंट जो है पे करना पड़ेगा और ऑन working of suspension under rule 10(5)(c) an order of suspension deemed to have been made can be revoked by the competent department. It is that no firm drawn with a view to was a departmental proceedings may be revoked, that if it is decided that कोई भी no formal proceedings be drawn up. Yeah, formal proceedings was a penalty of dismissal या removal या फिर आप उसमें रिवोक किया जाता है. फिर द फाइनल ऑर्डर पास इज डिसमिस. यहाँ पर जो फाइनल ऑर्डर जो आप दे रहे हैं ना, other than dismissal or compulsory retirement, where the government servant generated charges against him free कर दिया गया. In appeal or revision modified into one other than dismissal. पहले आपने किया उसको उन्होंने और कर दिया. ठीक है, आपने की. ठीक है, तो ऑर्डर को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया टू वन अनदर देन डिसमिसल के अलावा कर दिया. तो नो फर्दर इंक्वायरी इज ऑर्डर टू बी. केस में जो है आप ही क्रिमिनल ऑफेंस के केस में इन अरेस्ट एंड proceed further against the government by filing in arrest and यहाँ पर भी अरेस्ट नोट प्रोसीड फर्दर बाय फाइलिंग चार्जशीट. आपको सिर्फ चार्जशीट फाइल कर देनी है. डिवीजन अगर मान लीजिए आपकी डाली अपने रिव्यू डाली अगेंस्ट अगर वो फेल हो जाती है, आप इफ एक्चुअली in trial court or in appeal court is the conviction ultimately acquitted, and when it is not proposed to continue the suspension department procedure. और दोबारा दोबारा देखिए जो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर क्या था कि इन अरेस्ट एंड डिटेंशन केसेस यहाँ पर भी अरेस्ट और इट इज प्रोसीड फर्दर अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय फाइलिंग टू डिस्पीड फर्दर गवर्नमेंट सर्वेंट बाय फाइलिंग अ चार्जशीट इन द चार्जशीट फाइल आगे नहीं बढ़. इफ अपील और रिविजन कोर्ट फेल्स तो भी आपने अपील डाली कोई अगेंस्ट एक्विटल मतलब बरी कर दिया कि इफ appeal or high court फेल आपने डिपार्टमेंट ने केस को डिपार्टमेंट क्यों अपील करेगा.
or in Division High Court against and to department initially. When it is closed, supposed to continue even though department may be initially. An order of revocation may effect from the date of issue. कि जो order है of revocation taken from the date of issue. Or where there is not able to reinstate it with immediate effect, the order of revocation should it will be specified. Order of revocation should be made in the competent authority कौन है देखिए अंडर रूल 10 only the following authorities are competent to place appointing authorities as well the authority to which appointing authority is subordinate यहाँ पर कौन कौन है इसके अंदर सबसे पहले आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी और जो कोई भी अथॉरिटी दैट इज सबऑर्डिनेट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी बाद आपका डिसिप्लिन अथॉरिटी ठीक है फिर आता है आपका एनी अथॉरिटी एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ एनी अथॉरिटी वर्ड द प्रेसिडेंट जनरल नोटिस अंडर प्रोविजन 10(1) ठीक है इफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज मेड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन योर तो भी अगर मान लीजिए 10(1) इफ एन ऑर्डर कहता है बाय एन अथॉरिटी लोअर देन अपॉइंटिंग report to the particular cell in which the order was made. The report is not, however, necessary in the case of an order. Again, in regard to a member of the तो कहते हैं कि if order of suspension by an authority lower than the appointing authority, he should report करना है the appointing authority. Circumstances in which the order के पहला the report is not, however, necessary in case of कह रहे हैं not necessary कहाँ necessary in the case by CAG regard to a member of any regard to a of assistant accountant general equivalent other than a regular okay? Supervisory officer supervisory officer is field officer located outside headquarters may issue a special order in the name of the president in empowered to place officers subordinate to them under suspension important है supervisor officer जो कि field office में ठीक है तो supervisory field located outside headquarters जो कि office located outside headquarters may by issue of special orders in be empowered to report to them under they report the facts to higher authority. But they report the fact of higher next authority. Supervisory office field offices supervisory offices located outside located outside headquarter के बाहर है may by issue of special order say president by issue of special order by issue special order in the name of the pursuance of 10 empowered to place coordinate. Okay. It is imperative that before passing an order of suspension, authority proposing to make the order should that he is competent to pass an order. Order made without justice, giving cause action, setting aside of the order of suspension, claiming full payment the government remain away from duty to the order of suspension. In case of the government servant who serves sent by one department to another, the borrower from government authority, the borrowing authority exercising power of appointment in place. Okay. The son government servant sent by another department. Or to department by one department to another, borrowed from the land to the state government or an authority subordinate thereto, the local authority. The borrowing authority है exercising the powers of the appointing authority
can place him under suspension. Okay, simultaneously informing the landing authority of the circumstance leading to it. Okay, simultaneously the landing authority of the circumstance leading to the order. Okay. The Rule 10.5. See the authority which made or is deemed have made the order of suspension. The authority which made or deemed have made it can revoke. Headquarter however, होता है an office office under suspension regarded as subject to all the conditions of government service cannot therefore leave headquarter without permission. Officer under suspension regarded as subject to all other conditions to government service cannot therefore leave or not leave headquarter without permission headquarter. And then the station of post post is the headquarter of the form of order suspension. Common authority can change when an individual under suspension requests for a change of input or to other complications. कोई भी there is no it है complication what a during there will be what a during charged on tail subject to any रिपोर्ट कर सकती है भाई रिपोर्ट रिगार्डिंग अपील अगेंस्ट सस्पेंशन के अगेंस्ट में अगर कोई अपील करता है in itself is hardship. If is available to him by way of 3.1 provided that 10 it is implied that a government servant plays generally know the reason that he may be. If he so that normally the order places itself contain a mention of the discipline pending effect of investigation. ठीक है under investigation or trial. Here, however, his suspension is on the ground of contempt. Her suspension is on the ground of contemplated discipline. The reason of suspension is communicated to the government servant immediately on the expiry of the time represented by the issue of charge sheet. Date of suspension may be in a position to effectively get the right of appeal available to him. Okay. The time limit for 45 days for such case of the reason of the time limit of 40 for some they will count from तो 45 दिन का उसको टाइम मिलता है 45 डेज या आपको 45 days के अलावा आपको मंथ्स जो है उसको रिव्यू करना होता है रूल 27 the authority should have whether the light of provision having regard to the designation to government whether it would
आपका अरे if government से run I mean with it would be quantum of conversion that website where the department contracted these cases the resume the prior approval of a holder of the in charge in or okay इससे आगे है आपका द रेजिडेंट एंड बाय द ऑफिशियल अंडर सस्पेंशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड अंटिल ऑल हिज अकाउंट्स आर जस्टिफाइड ठीक है रेजिग्नेशन जो है जब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करना है शुड नॉट बी एक्सेप्टेड शुड नॉट बी should not be accepted until all his accounts are justified जब तक उसके until all his accounts are adjusted ठीक है रेजिग्नेशन becomes effective एक रेजिग्नेशन जो है that becomes effective not merely when it is accepted by the authority concerned but only when the officer is actually relieved of his duties ठीक है ये इंपॉर्टेंट है कि जो है रेजिग्नेशन जो है becomes effective not merely नहीं होता when it is accepted by the authority concerned but only तब होता है but when the officer is actually relieved of his duties an officer submits an application to the withdrawal to the resignation before it has become effective it is open to the authority that which accepted it to permit the withdrawal of the resignation. If an officer submits application to the, for the withdrawal of the अच्छा अगर मान लीजिए if he submits application for the withdrawal of the resignation before it becomes effective okay? And before it has become effective it is open to, तो क्या है इस केस में भी the authority which accepted it to permit the withdrawal of the where the resignation has become effective the government authority may permit the withdrawal of the resignation तब भी where the resignation has been effective और जहाँ पर जो है where the resignation has become effective the appointing authority कौन है तो may permit the वो कर सकती है permit the withdrawal of the if the period from the date of the resignation become effective and the date of resumption of duty does not exceed 90 days but it should not exceed 90 days other sanction the government is necessary उस केस में भी जो गवर्नमेंट का sanction where the resignation has become effective and appointing authority may permit the withdrawal of the resignation if the period from the date of resignation becomes effective from the date of resumption of duty from the date of resignation become effective in the date of resumption of duty does not exceed जो है 90 days और अदरवाइज जो है अदरवाइज भी जो है गवर्नमेंट इसको कर सकती है ठीक है गिव मी 2 minutes
राइट, आगे मूव करते हैं हम। अब बात करते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट की या फिर रेजिग्नेशन की। बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या हो सकती है या फिर रेजिग्नेशन दे सकते हैं। बोलते हैं नोटिस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर आर्टिकल 56 के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 56 के वॉलंटरी रिटायरमेंट। 56 जे तो सुना था आपने, है ना, होती है कंपलसरी रिटायरमेंट शायद, है ना। और 56 के अंदर था वॉलंटरी रिटायरमेंट। नोटिस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर 56 के और रूल 48(1) ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, नाउ रूल 42 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 2021। It shall be open to the appropriate authority to withhold permission to a government servant and citizen who seeks to retire under either of these two rules. Okay? मतलब जो है एक तरीके से गवर्नमेंट जो है, it is open to the appropriate authority to withhold permission to a government servant under suspension who seeks retire under either of these two rules. तो मान लीजिए कोई 6 के अंडर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है या फिर 48(1) के अंडर कुछ है तो मना है। दूसरा है आपका 48A, वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर 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 रूल 48A ऑफ पेंशन रूल्स। ठीक है, वेयर द नोटिस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द appointing authority, the government servant giving notice may presume acceptance and the retirement shall be effective in terms of notice unless the government issues an order on the contrary before the expiry of the period of notice. बोलता है वेयर a notice of the voluntary retirement given by a government servant requires that where the notice जो है requires acceptance by a public appointing authority, the government servant shall giving notice may presume, ठीक है, जो है government may presume acceptance and the retirement shall be effective in terms of the notices competent authority unless the competent authority issues an order to the contrary before the expiry of the period of notice. तो period of notice क्या होना चाहिए वो देखना पड़ेगा बस आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रांट ऑफ लीव ड्यूरिंग सस्पेंशन। फंडामेंटल रूल 55 बोला दैट प्रोहिबिट्स द ग्रांट ऑफ लीव टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। तो वो क्या है, वो प्रोहिबिट है, नहीं कर सकते आप। प्रोहिबिट्स, कोई छुट्टी नहीं दे सकते आप व्हेन यू आर सस्पेंशन। ठीक है, रिटायरमेंट वाइल अंडर सस्पेंशन, क्या आप रिटायरमेंट ले सकते, देखो वॉलंटरी रिटायरमेंट तो नहीं ले सकते और रेजिग्नेशन भी नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन क्या आप रिटायरमेंट ले सकते हैं वाइल सस्पेंड। तो अंडर सेक्शन क्लोज के ऑफ फंडामेंट 56 इट इज ओपन टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन हिज ओन अकॉर्ड और अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स। ठीक है, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विस और पोस्ट who has entered service before attaining the age of 35 years by giving the appropriate authority a notice of not less than 3 months in writing। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि क्या कोई पर्सन जो है हु इज क्या वो रिटायर हो सकता है। तो यहाँ पर 56 के, ठीक है, रिटायरमेंट। तो बोलता है रिटायरमेंट अंडर वाइल अंडर सस्पेंशन, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो बोलता है अंडर क्लोज के ऑफ फंडामेंटल रूल 56 इट इज ओपन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिटायर फ्रॉम सर्विस। ठीक है, ये ओपन है गवर्नमेंट सर्विस के लिए कि टू रिटायर हो सकते हैं ऑन हिज ओन अकॉर्ड, जब भी वो चाहे, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स। इस रूल के अंदर क्लोज 56 के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन हिज ओन अकॉर्ड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स, 55 साल के बाद जो है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ए और बी है। ठीक है, 55 ईयर्स इन द केस ऑफ ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस और पोस्ट हु हैज एंटर्ड सर्विस और पोस्ट हु हैज एंटर्ड सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 35 ईयर्स। हैज एंटर्ड सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ, किसी भी ऐसी पोस्ट पे जिसने 35 ईयर से पहले पहले, और हु हैज एंटर्ड सर्विस फॉर अटेनिंग द एज ऑफ 35 ईयर, 35 साल के होने से पहले पहले आपने कोई भी वो ले लिया है तो उसमें भी आप ले सकते हो बाय गिविंग टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नोटिस ऑफ नोट लेस देन 3 मंथ्स। एक आपको नोटिस देना है नोट लेस देन 3 मंथ्स इन राइटिंग। ठीक है, ठीक है। फिर अंडर रूल जो है 48 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल्स, गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइड सर्विस। ठीक है, रूल आपका 48 बोलता है पेंशन रूल का, the person who has completed 30 years of qualifying service may at any time retire from service voluntarily by giving a notice in writing to the appointing authority at least 3 months before the date on which he wishes to retire. In case of government servant under suspension, the right to retire voluntarily under suspension rules is
द प्रायर अप्रूवल, ठीक है। अगर आप सस्पेंशन में हो तो, अंडर सस्पेंशन में हो तो, ठीक है, इट इज सब्जेक्ट टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विच द authority which has the power to make substantive appointments to the post or service from which the post government servant wants to retire. The right conferred on the can be exercised even if government servant is placed in suspension after giving the notice of retirement, ठीक है। होता है the right conferred on the appropriate authority can be exercised even if a government servant is placed under suspension, even if a government servant is placed under suspension after giving the notice for retirement, ठीक है। तब भी उनके ऊपर the right अथॉरिटी के ऊपर ये राइट है, राइट ऑन दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इज अंडर सस्पेंशन आफ्टर गिविंग द नोटिस ऑफ फॉर रिटायरमेंट दे दिया, तब भी उसके ऊपर राइट है, वो चाहे तो वो उनको मना कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नोटिस दे दिया तो अब जो है वो चले ही जाएंगे, राइट। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अंडर सस्पेंशन अटेन्स द एज ऑफ सुपरविजन बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट कोर्ट प्रोसीडिंग, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है अंडर सस्पेंशन है, मान लीजिए वो सस्पेंशन है, अभी अंडर सस्पेंशन है, अटेन्स द एज ऑफ सुपरविजन, ठीक है, बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द डिपार्टमेंट कोर्ट प्रोसीडिंग, ठीक है। मान लीजिए जिसकी एक महीना पहले ही रिटायर होने वाला है, एक महीना पहले डीआई खुल गई, तो उसमें क्या करेगा, ही शुड बी प्रोविजनली पेंशन ऑफ, उसको जो है प्रोविजनली, इसमें क्या होगा, ही शुड बी प्रोविजनली पेंशन ऑफ, he will cease to draw subsistence allowance but will be paid only provisional pension under article A. तो ये कहता है if a government servant under servant attains the age of superannuation before the termination of department inquiry, he should be provisionally pensioned off. Pensioned off मतलब दे देना चाहिए या क्या? Pensioned off. Pensioned off means to allow or force an employee to leave a job or accept a pension. Okay. Then he should be provisionally उसको pension off कर दीजिए, मतलब allow कर दीजिए एक तरीके से आप, ठीक है। ही विल सीज टू ड्रॉ सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस है ना वो सीज हो जाएंगे उनके, ही विल सीज टू ड्रॉ सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं मिलेंगे उनको अलाउंसेस, ठीक है। बट विल बी पेड ओनली प्रोविजनल पेंशन, पेड ओनली द प्रोविजनल पेंशन मिलेगी सिर्फ अंडर रूल सेक्शन पेंशन रूल्स। द प्रोविजनल पेंशन पेबल विल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम पेंशन विच वुड हैव बीन एडमिसिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अप टू द डेट which immediately preceding the date on which he was placed in suspension. No gratuity will however be paid on him until the conclusion of the proceeding. Okay, कोई gratuity नहीं मिलेगी इस केस में उनको, और द इशू द फाइनल ऑर्डर देर ऑन, ठीक है। तो उनको क्या क्या नहीं मिलेगा, कोई ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, ठीक है। और ही शुड बी प्रोविजनली पेंशन ऑफ, ही विल सीज टू ड्रॉ सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, एंड विल बी पेड प्रोविजनल पेंशन मिलेगी, ठीक है। द प्रोविजनल पेंशन में विल नॉट एक्सीड, और ये जो प्रोविजनल पेंशन है ना, it will not exceed the maximum pension which would have been admissible on the basis of qualifying service up to the date immediately preceding on the date on which he was placed in suspension, ठीक है। काउंटिंग ऑफ पीरियड्स ऑफ सस्पेंशन, किस तरीके से आपको पीरियड ऑफ सस्पेंशन काउंट करना है वो देख लेते हैं अभी। बोलता है टाइम पास बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, टाइम पास बाय गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी इनटू हिज कंडक्ट विल विल देखो जो भी आपने गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी अंडर सस्पेंशन है ना, पेंडिंग इंक्वायरी इनटू हिज कंडक्ट will count as a qualifying service. Yes, this will count as a qualifying service where on conclusion of such inquiry he has been fully exonerated on the suspension is held or wholly unjustified. In other case, the commander should be appropriate and time declare whether to what extent the period of suspension will count as a qualifying service. Other cases, के अंदर जो competent authority हैं, in other cases जब जहाँ पर आप fully exonerate हो जाते हो इसके अंदर, ठीक है, fully exoneration वाले केस के अंदर, ठीक है। In other cases में the competent authority should be at the appropriate time declare whether and to what extent the period of suspension will count as a qualifying service for suspension. Specific entry in this regard are to be made in service book, are to be taken note of the time of reckoning qualifying service. Okay? Effect on pension. If a government servant immediately before his retirement or death while in service have been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which he would have drawn had he not been suspended shall the emoluments फॉर द पर्पज ऑफ रूल 33 ऑफ द सस्पेंशन रूल्स। देखिए अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है इमीडिएटली बिफोर इज रिटायरमेंट, अगर एकदम इमीडिएटली बिफोर इज रिटायरमेंट और डेथ वाइल इन सर्विस हैव बीन सस्पेंड, उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसको बिन री उसको री किया गया विदाउट फॉर फ्यूचर ऑफ सर्विस, ठीक है। तो एमोलीमेंट्स विच ही वुड हैव ड्रॉन, ये कहता है एमोलीमेंट्स विच ही वुड हैव ड्रॉन हैड ही नॉट बीन सस्पेंडेड
shall be the emoluments for the purpose of Rule 33, and same shall be taken into account for determining the average emoluments. This is without regard to the order passed by the competent disciplinary authority fixing the quantum of pay and allowance to pay to the government servant for a period of suspension. Even though the competent authority may allow reduced quantum and reduced quantum of pay and allowances for the period of suspension, the full amount of pay which the government servant would have got had it not been under suspension will count as emolument. ठीक है? बोलता है even though the competent authority may allow reduced quantum of pay and allowances for the period of suspension, वो कर सकती है, but the full amount of pay which the government servant would have got had it not been under suspension will count as an emolument. Okay, the difference between the subsistence allowance and the emoluments would have been drawn had it not been suspended and is not treated as increase in pay. ठीक है, that is not treated as increase in pay, which does not form the part of his emolument. Okay, and which does not part form his emoluments. Okay, the difference between the subsistence allowance and the emoluments which would have been drawn had it not been suspended. ठीक है, क्या क्लियर है आपका? चलिए बात करते हैं कि जो अगर कोई सस्पेंड हुआ था तो उसका लीव एनकैशमेंट पर क्या फर्क पड़ता है. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु while under suspension is retired from service on attaining the age of superannuation before the termination of departmental grant to leave. Okay. देखिए लीव एनकैशमेंट पर क्या क्या फर्क पड़ता है बताते हैं आपको. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाइल अंडर सस्पेंशन जो है रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, अगर जैसे ही वो मान लीजिए रिटायर होता है सर्विस से, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाइल अंडर सस्पेंशन is retired from service on attaining the age of superannuation before the termination of departmental, तब जब भी उसकी वो जो है terminal department proceeding, the competent authorities to grant leave may withhold, जो भी competent authority है to grant leave may withhold whole or part of the cash equivalent of the earned leave, रोक लेगा उनको. If we know the view that there is a possibility of some money becoming recoverable from him on conclusion of the proceedings. ठीक है, डेथ वाइल अंडर सस्पेंशन, वाला गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन डाइज, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन डाइज बिफोर द डिसीजन, बिफोर दिस, ठीक है, डाइज इंस्टेंट अगेंस्ट मार्क इंक्लूडेड, सच प्रोसीडिंग्स वुड टर्मिनेट. तो सच प्रोसीडिंग्स क्या हैं? दैट वुड टर्मिनेट एंड अबेट बाय रीजन ऑफ डेथ. अबेट क्या होता है? अबेट का माना टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और मेक लेस स्ट्रॉन्ग, की रोकथाम. तो दैट मीन्स जो वो जो ऐसी जो प्रोसीडिंग्स है वो रुक जाएंगी ऑटोमेटिकली. ठीक है, द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ सस्पेंशन एंड द डेट ऑफ डेथ विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी. ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ सस्पेंशन and the date of death will be treated as duty for all purposes of provided fundamental rule 54b. His family will be paid the full pay and the allowances for that period to which he would have entitled and had he not been suspended, subject to adjustment in respect of subsistence allowance already paid with eligibility for pension, family pension, death gratuity income, सब कुछ मिलेगा उसको. Paid the full pay and allowances he would have been entitled had he not been suspended, कुछ मिलेगा उसको family pension. Termination of service, if it would be open to the competent authority to terminate, okay, it would be open to the type of CCS temporary service condition, the service of service of temporary government servant while he is under suspension. Okay? Open, it's open to the competent authority to terminate the services of a temporary government while he is under suspension. तो उसकी सर्विस आप
and department proceedings are pending against him. It has been held that as on 5 full pay and losses for the month notice has to be paid, which could be done only if the official was held as not being under suspension to revoke the order of suspension before invoking. बोलता है कोई भी टेम्पररी एम्प्लॉय है तो उसको आप सस्पेंशन आप टर्म कर सकते हैं एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट while he is under suspension. Okay. It has been held that as under rule 5 full pay and allowances for the month of notice will be paid. कहता है रूल 5 कहता है आपका that full pay and allowances for the month of notice has to be paid, which could be done only if the official official was treated as not being under suspension. It is necessary to revoke the order of suspension for invoking rule 5. तो कहीं ना कहीं नेसेसरी होता है टू रिवोक द ऑर्डर ऑफ द रूल 5. ठीक है. प्रमोशन और कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? देखिए क्या उनको प्रमोशन मिलेगी, कन्फर्मेशन मिलेगी. देखिए एज सस्पेंशन इज ओनली अ टेम्पररी फेज. ऑर्डर एग्जिस्ट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट इन द मैटर ऑफ प्रमोशन. कमेंट 7 safeguard the interest in the promotion and confirmation. Comment 7 suspension. Only a temporary phase. Order exists to safeguard the interest in the matter of promotion. And as an officer of suitability for promotion, assessed at the relevant time in case of an officer against whom department is in proceeding, any case in court is pending. Fact is brought to the notice of the department for promotion. For the purpose of assessment for promotion, however, the committee should not take into pending case against the officer. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको करेंगे या नहीं करेंगे. ठीक है. प्रमोशन और कन्फर्मेशन बोलता है एज सस्पेंशन इज ओनली अ टेम्पररी फेज. Orders exist to safeguard the interest in the matter of promotion and confirmation of government servant under orders exist safeguard the मतलब सस्पेंशन जो है सिर्फ एक टेम्पररी फेज है और ऐसे ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर उनको सेफ गार्ड किया जाए इंटरेस्ट इन द मैटर ऑफ प्रमोशन कन्फर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन. एज एन ऑफिसर सुटेबिलिटी फॉर प्रमोशन बी एसेस्ड. तो एसेस तो किया जाएगा. ठीक है. एज एन ऑफिसर्स सुटेबिलिटी फॉर प्रमोशन शुड बी एसेस्ड. उसको एसेस तो किया जाएगा एट द रेलिवेंट टाइम. ठीक है. इन केस ऑफ एन ऑफिसर अगेंस्ट होम डिपार्टमेंट डिसिप्लिन प्रोसीडिंग और एनी केस कोर्ट इज पेंडिंग. ठीक है. In case of an officer against whom departmental disciplinary proceedings or any case court is pending, the fact is to be brought to the notice of the departmental fact is to be brought to the notice of the departmental committee to be brought to the. ठीक है. For the purpose of assessment for promotion, however, the committee should not take into account. आपको लाया जाएगा वो for the purpose of however committee should not take into consideration the fact of pending case against the नहीं करना है. The committee will assess the suitability of the officer under suspension along with other eligible candidates without taking okay, the disciplinary case or the criminal prosecution pending against him. Okay. The assessment of DPC including unfit for promotion and the rating awarded by it will be kept in a sealed cover. Okay. कह रहे हैं that the assessment of the DPC including unfit and the rating awarded by it will be kept in a sealed. The same procedure will be followed by the subsequent until the disciplinary or contemptibility the government servant concerned is concerned. On the conclusion of the discipline case, criminal prosecution, sealed cover or covers will be opened. In case the government servant is completely exonerated, okay, yes, cover will be opened on conclusion. Okay, so in case the government servant जो है completely exonerate अगर होता है उसका the due date of his promotion will be determined with the position assigned to him in the findings kept in the sealed cover. The due date for his and reference to the position assigned to him, finding kept in the cover or covers with reference to the date of promotion. Next, junior, the basis of same position. Okay. With reference to the date of next here, the basis of
will be promoted by reverting the most officiating person. हाँ, ये condition में yes, he will be promoted if necessary by reverting the junior most. His promotion will be notional with reference to the date of promotion, but entitlement to any arrears of pay for the period between the date of decided by the upon taking all effects. Case which their arrears in full or part is denied, the authority will record reasons. बोलता है इसके आगे बोलता है that his motion with reference to the date of the reference to promotion, but entitlement to any area pay for the date of appointing authority consideration all facts and their arrear is और जो है arrears बात आती है part is to be authority will if any penalty is imposed on the officer as a result of the found guilty for putting him financial cover will not be. अगर मान लीजिए फाउंड गिल्टी तो जो सील्ड कवर विल नॉट बी एक्टेड अपॉन हिज जो है इस केस में क्या होगा कंसिडर्ड also by the department after the conclusion regard to the penalty here a promotion to the next higher grade a minimum period of service guide promotion to the grade a minimum but the government servant under not put in on account of suspension ultimately found to be period during which an was promoted to the higher grade. Second was the minimum period of service referred to above for the purpose of defining his. नहीं आया समझ में बोलते हैं वेयर द प्रमोशन इज नेक्स्ट हायर ग्रेड मिनिमम पीरियड जहाँ पर जो मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस फॉर द but which the government servant not put in account on account was ultimately found to be wholly unjustified. Wholly unjustified. जो भी उसकी जो सस्पेंड द period during which an officer was promoted तो भी जो पीरियड है was promoted to the higher grade will be reckoned towards the minimum period of service referred to above for the purpose of यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका रेकन रेकन मतलब प्रदान करना मानना समझना किसी में विचार होना मोटे तौर पर कोई हिसाब नहीं नेक्स्ट बोलता है आपका बोलता है द प्रोसीजर लेड डाउन इन प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स इज आल्सो टू बी फॉलोड इन कंसीडरेशन क्लेम्स बोलता है द प्रोसीजर laid down in the preceding paragraph is also to be followed in considering claims for confirmation suspension confirmation के लिए भी यही चीज़ आपको करनी है for confirmation suspension for an officer whose conduct is under in such a case the permanent vacancy should be reserved till a final in such a case अगर किसी को confirm करना है ना is permanent जो है vacancy should be reserved till a final decision for where such an officer is reduced in rank for a specified period till he is restored to ठीक है एक बार हालांकि इसको पढ़ चुके हैं बट आई वुड लाइक टू रिपीट दिस थोड़ा इंपॉर्टेंट है लगा मुझे ये थोड़ा सा प्रमोशन और कन्फर्मेशन के केस में क्या करना है देखते हैं बोलता है एज सस्पेंशन इज ओनली अ टेम्पररी फेज सस्पेंशन टेम्पररी फेज द ऑर्डर एग्जिस्ट टू सेफगार्ड दी तो ऑर्डर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट इन द मैटर ऑफ प्रमोशन ऑफिसर सुटेबिलिटी फॉर प्रमोशन शुड बी एसेस तो उसको एसेस तो किया जाएगा at the relevant time in case an officer against him who department in is pending ठीक है एसेस तो किया जाएगा द फैक्ट इज टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द डिपार्टमेंट लेकिन उसको वो कंसीडर नहीं करेगी ठीक है द फैक्ट ऑफ पेंडिंग केस अगेंस्ट हिम ठीक है कमिटी जो है विल assess the suitability of the under suspension along with other without taking into consideration this the assessment of the DPC including unfit for promotion and the grading awarded by it will be kept in a sealed cover ठीक है उसको लिख दिया जाएगा अनफिट फॉर क्योंकि वो सस्पेंडेड है अभी ठीक है और जो भी ग्रेडिंग है उसके अंदर सील्ड कवर के अंदर रख दी जाएगी द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड बाय द सब्सिक्वेंट डीपीसी कंसर्न टिल द डिसिप्लिन जो है उनकी पेंडिंग है जब तक ऑन द कंक्लूजन जैसे ही वो होता है सील्ड कवर को ओपन किया जाएगा और जो
अगर वो जो पर्सन है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो कंप्लीटली एक्सोनरेट है, देन द ड्यू डेट ऑफ प्रमोशन विल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द पोजीशन असाइन टू हिम इन द फाइंडिंग्स केप्ट इन द सील्ड कवर। जो भी उसकी फाइंडिंग, जो भी उसको रैंकिंग दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको पोजीशन दी जाएगी। एंड विद रेफरेंस टू द डेट ऑफ प्रमोशन, उसकी जो डेट ऑफ प्रमोशन होगी ऑफ हिज नेक्स्ट जूनियर ऑन द बेसिस ऑफ सच, विद रेफरेंस, और जो है एंड विद रेफरेंस टू द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ हिज नेक्स्ट जूनियर ऑन द बेसिस ऑफ सच पोजीशन, विद रेफरेंस टू द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ हिज नेक्स्ट जूनियर। जो भी उससे जूनियर होगा ना, उसकी डेट से उसको मतलब पहले बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको आज की डेट में बना रहे प्रमोशन, नहीं। जो भी उनके जूनियर मोस्ट होगा ना, नेक्स्ट जूनियर जो होगा उनसे, मतलब मान लीजिए हाँ, उनसे जो नेक्स्ट जूनियर उनसे पहले आएगा, विल बी प्रमोटेड इफ नेसेसरी बाय रिवर्टिंग द जूनियर मोस्ट ऑफिसर। अगर जरूरत पड़ती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि उस बंदे को जो जूनियर मोस्ट पर्सन ऑफिसर ना, तो वापस से रिवर्ट भी किया जा सकता है ना। रिवर्ट किया जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको रिवर्ट किया जा सकता है। इस प्रमोशन विल बी नोशनल, लेकिन जो प्रमोशन होगी नोशनल होगी विद रेफरेंस टू द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ हिज जूनियर, ठीक है। बट एंटाइटलमेंट टू एनी एरियर्स ऑफ पे, बोलते हैं हिज प्रमोशन विल बी नोशनल विद रेफरेंस टू द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ हिज जूनियर, ठीक है। वो नोशनल होगी ऑटोमेटिकली, माना जाएगा उसको, मतलब ठीक है। बट एंटाइटलमेंट टू एनी एरियर्स ऑफ पे फॉर द पीरियड प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एक्चुअल प्रमोशन विल बी डिसाइडेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। बट एंटाइटलमेंट टू एनी एरियर्स ऑफ पे, वो जो है एरियर्स जो की बात की अगर की जाए, एरियर्स ऑफ पे, दैट विल बी फॉर द पीरियड प्रीसीडिंग द डेट एक्चुअल प्रमोशन विल बी डिसाइडेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टेकिंग इनटू कंसीडर ऑल फैक्ट्स ऑफ सर्कमस्टेंस ऑफ द केस where arrears in full or part is denied by the owner will record the reason for doing so, ठीक है। इफ एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन दी ऑफिसर, अगर मान लीजिए कोई भी ऑफिसर के ऊपर इफ पेनल्टी इज इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर, if he is found guilty in the court proceedings against him, the findings in the sealed cover will not be acted upon, तो वो जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं किया जाएगा। इस केस फॉर प्रमोशन हैज टू बी कंसिडर्ड इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बाय द डिपार्टमेंट, तो यूजुअल कोर्स जो है, यूजुअल कोर्स में उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। बाय द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, जैसे जब भी नेक्स्ट डीपीसी जो बैठेगी, नेक्स्ट डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी बैठेगी, तब उसको डिसाइड किया जाएगा। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द डिसिप्लिनरी और कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैविंग रिगार्ड टू द पेनल्टी अपोज्ड अपॉन हिम, ठीक है। आफ्टर द जो भी उसके ऊपर है वो, और सब कुछ वो देख देख के, जो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगी है सब कुछ देख देख के वो ऊपर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है वेयर द प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट टू द वेयर फॉर द प्रमोशन ऑफ नेक्स्ट ग्रेड मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस इज प्रेस्क्राइब, जहाँ पर भी जो प्रमोशन के लिए जो है नेक्स्ट ग्रेड जो है मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस इज प्रेस्क्राइब, बट which the government servant under suspension could not be put into account of a suspension, it was ultimately found to be wholly unjustified. The period जो है which any junior officer junior to him was promoted to the higher grade will be reckoned towards the minimum period of service, ठीक है। माना जाएगा वो जो पीरियड है वही काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उसको ऑटोमेटिकली द पीरियड ड्यूरिंग विच एनी ऑफिसर टू हिम was promoted to the higher grade, ठीक है, will be reckoned towards the minimum period of the service referred to above for the purpose of determining his eligibility for the promotion of the higher grade. बोलता है the procedure laid down in the preceding paragraph is also to be followed in the for confirmation of an officer under suspension, ठीक है। In such a case a permanent vacancy should be reserved till a final decision is reached, ठीक है। Okay, got it. आगे बात करते हैं परमिशन टू अपीयर इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। कोई बंदा सस्पेंशन में है तो दे सकता है, हाँ दे सकता है बिल्कुल। एन ऑफिशियल में बी अलाउड टेक एन एग्जामिनेशन फॉर डिपार्टमेंट इवन दो ही इज अंडर सस्पेंशन प्रोवाइड्स दैट ही सेटिस्फाई ऑल द अदर कंडीशन प्रेजेंट फॉर एडमिशन टू सस्पेंशन। द ऑफिशियल और द ऑफिशियल कैन हाउएवर बी प्रमोटेड ओनली आफ्टर द रिसीव, यस मे बी अलाउड, ठीक है, इसको अलाउ कर सकते हैं हम। द ऑफिशियल हाउएवर बी प्रमोटेड ओनली आफ्टर द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर ओवर एंड ही इज कंप्लीटली एक्सोनरेट होता है तभी, ठीक है। इफ एनी पनिशमेंट इज इम्पोज्ड एंड आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइडेड टू प्रमोट हिम, he should be promoted only after the expiry of penalty, other than ensure his seniority in the higher grade, however being reckoned on the basis of the rank obtained in the examination, ठीक है। Reversion to lower post, a government servant placed under suspension while officiating in a higher post can be reverted to a lower post otherwise than as punishment even during his suspension, ठीक है। The placed under suspension while officiating in a higher post can be reverted to the lower post otherwise than as punishment even during his suspension. Governments placed under suspension while officiating in a higher post can be reverted to lower post otherwise than as punishment even during his suspension. Otherwise then मतलब lower post otherwise then as punishment and then as punishment even during his suspension may be reverted to lower post otherwise can be reverted to the lower post otherwise
then as punishment, otherwise then as punishment even during his suspension. Officiating higher post can be reverted to the lower post. He can be reverted. ये तो बात आ गया. Otherwise then as punishment. तो कोई बंदा सस्पेंड तब भी उसको जो है आप ये करना चाहूँगा. इसका गवर्नमेंट से प्लेस अंडर सस्पेंशन वाले ऑफिसरिंग इन हायर पोस्ट कैन बी रिवर्टेड टू द लोअर पोस्ट. उसको लोअर पोस्ट में आप कर सकते हो. अदरवाइज भी ठीक है. देन एज पनिशमेंट अदरवाइज भी कर सकते हो. अदरवाइज भी कर सकते हो. तो देन एज अ पनिशमेंट इवन ड्यूरिंग हिज forwarding of applications की बात. Applications of government servant who are under suspension or against one are pending should not be forwarded, nor should they be released for any assignment, scholarship, forward of application of government servant who are under suspension or against are pending should not be forwarded, nor should be released for any assignment, scholarship, fellow training under any international agencies. ठीक है. Should also not be sent or allowed to go on deputation or foreign service imposed under payment of subsistence allowance. बोलते हैं इनिशियल ग्रांट जो है अंडर रूल 53 गवर्नमेंट सर्वेंट शेल अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड फॉर द फर्स्ट 3 months द पीरियड ऑफ सस्पेंशन. वो जो है ना एंटाइटल्ड अप टू द फर्स्ट 3 months ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन and to subsistence allowance at an amount equal to his leave salary. Amount equal to his salary which would have drawn if he had half pay. Allowance at amount equal to the leave salary which he would have drawn if he had been on leave on a half pay. जितना वो हाफ पे में होता है उतनी उसको लीव मिलेगी. लीव सैलरी दी जाएगी उसको. Fixation of the quantum of subsistence allowance for the initial period of 6 months is automatic. ये जो है फर्स्ट 3 फिक्सेशन ऑफ क्वांटम ऑफ सब्सिडेंस अलाउंस जो है वो ऑटोमेटिक होता है 3 months के लिए. एंड नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नेसेसरी इन दिस रिगार्ड. हाउएवर एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर प्रोवाइड्स फॉर इशू एन ऑर्डर. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर प्रोवाइड्स फॉर इशू ऑफ एनी ऑर्डर फर्स्ट रिव्यू कहते हैं. And the competent authority may vary in the amount of allowance for any period exceeding the first 3 months as follows. Increase by a suitable amount not exceeding 50. वो क्या कर सकते हैं फर्स्ट रिव्यू क्या कर सकते हैं दैट ही में इंक्रीज कि वो इंक्रीज कर सकते हैं. इंक्रीज बाय अ सूटेबल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द इनिशियल सब्सिस्टेंस अलाउंस if in the opinion of that authority that authority the period of suspension has been prolonged for reasons or to be recorded in writing not directly attributable to the government servant or टाइम पड़ रही है इसी पर. बोलते हैं क्या आप इंक्रीज बाय सुटेबल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग कोई भी जैसे फर्स्ट रिव्यू किया 3 months के लिए तो उसको आपने कर दिया पहले से वो ऑटोमेटिक उसको मिल गया सब्सिडेंस अलाउंस. कंपेटेंट अथॉरिटी में वेरी द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी जो वेरी कर सकती है. ठीक है. एनी पीरियड एक्सीड फॉर एनी पीरियड जैसे ड्यूरिंग 3 months जो है इंक्रीज बाय सुटेबल अमाउंट 10% ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन उसको कर सकते हैं. इफ द ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी द पीरियड ऑफ सस्पेंशन लॉन्ग फॉर रीजन. ठीक है. पीरियड ऑफ सस्पेंशन हैज लॉन्ग reasons called in writing not directly government service or and decrease by suitable amount not exceeding the initial task record directly attribute to decrease. As this review is mandated according series of the government, the competent authority should initiate the review, take a pass necessary orders the expiry of the first months, the expiry mentioned, right? So the review can take effect from the date of retrospective revision. That is not advisable that any advising effect. ये advisable नहीं है actually.
and that any orders revising these accounts given retrospective effect. In case, however, an order of variation of accounts is passed by the time expiry of the consent, that authority said that the variation has got to be given retrospective effect for record in writing, and same would be valid and binding on the then, however, order for variation of passed by the company quite some time, quite some that authority is satisfied. If that authority is satisfied that the variation has got to be given retrospective, तो वेरिएशन ये इंपॉर्टेंट है यार. प्रॉपर्टी कुछ भी कर सकती है, मतलब वेरिएशन passed passed by the property quite some time, after quite some time pass हो गया requisite 3 months, okay. And but authority was satisfied that the variation जो है has got to be given देना उसको for reasons to be recorded in writing, रिकॉर्ड कर दिया, and orders accordingly, ठीक है. Same would be binding on all concerned, जो है binding passed by the company. दोनों वे में है इसको रिविजन, मतलब पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं. नो रिविजन ऑन रिव्यू. Okay, the commitment authority may also decide after the review not to vary the quantum of accounts after, either to increase or to increase for the no revision on review. That the commitment authority may also decide after the review. Commitment authority जो है may also decide after the review not to vary the quantum of substance the first months. Okay, doesn't record to increase, चाहे तो कर सकते हैं ऐसे कि भाई ना ही बढ़ाना है ना ही घटाना है, और रखते हैं उसका circumstances under which further reviews. It is open to the competent authority to make further review or reviews during the suspension period and result to reduce the amount of one है open to the competent authority to make a further review जो है anytime the suspension period, ठीक है. And as a result to reduce the, चाहे वो reduce कर सकते हैं, the amount of accounts increased the basis of an earlier review. If the period of suspension long for each servant, if the period of suspension for that, similarly the suspension can be but in any case ये कहता है कि in any case जो है such increase or decrease in the amount will overall limit of 50 initially grant, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते भाई, ठीक है. Provision for appeal. Rule 5 clause D E to the CCA rules provides for government that he not satisfied with the decrease. अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है satisfied with the increase allowed by the preferring an appeal against, ठीक है, against the order for period during appeal to be, ठीक है. तो authority should the appellate authority जो है may degree and the authority may decree rate of counts not get deemed suspension after dismissal. In the case of government servant retired from service deemed to have raised or control fails to produce certificate of employment entitled to deemed suspension after dismissal. In the case of a government servant dismissed, removed, थोड़ा सा बोलता है
In the case of a government servant dismissed, remove, या compulsory retired from service who is deemed to have been placed or continue to be under suspension from the date of such dismissal or removal of compulsory retirement, and who fails to produce a certificate of non-employment shall be entitled to subsequent allowance from the date of order of dismissal, retirement equal to the amount by which he is earning, if any, during such period falls short of the amount of subsistence allowance that would otherwise be admissible to him. If his earnings are equal to more than subsistence allowance, he will not be paid anything. In cases where payment is to be made, this will be done with retrospective effect from the date of order of dismissal, and uh, and the law of limitation will not be involved. Okay, ये मुझे समझ दोबारा पढ़ते हैं. Deemed suspension after dismissal. डिसमिसल होगी तो डीम्ड सस्पेंशन तो है ही. ये क्या कह रहा है? डिसमिसल इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस्ड. In the case of government servant dismissed, removed या compulsory from service who is deemed to have been placed or ठीक है or continue to be under suspension from the date of such dismissal, okay, or continue to be under suspension from the date of such dismissal or removal and who fails to produce a certificate of non-employment, he shall be entitled to substance allowance. He fails and who fails to produce a of non-employment. आराम से पढ़ते हैं इसको. ये कह रहा है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस्ड, रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस. ठीक है. इन द केस ऑफ जब गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस, रिमूव या कंपल्सरी रिटायर किया था सर्विस से, हु इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड और कंटिन्यू टू बी अंडर सस्पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट. क्या suspension after dismissal बोलता है. In the case of government servant dismissed, removed or compulsorily retired from service who is deemed to have been placed or continue to be under suspension from the date of such dismissal or removal or compulsory retirement, and who fails to produce a certificate of non-employment, he shall be entitled to subsistence allowance from the date of order of dismissal, removal, compulsory retirement equal to the amount by which earnings, if any, during such period fall short of the amount of subsistence allowance that would otherwise be admissible to him. If his earnings are equal to or more than the subsistence allowance, he will not be paid anything. कुछ नहीं आया समझ में, दोबारा बोलेंगे इसको. Deemed suspension after dismissal. In the case of a government servant dismissed, removed, or compulsory retired from service, he who is deemed to have been placed, who is case of government servant is removed from service, who is deemed to have been placed or continue to be under suspension. Okay? The date of such. जब डिसमिसल कर दिया आपने तो सस्पेंशन का क्या मतलब रहेगा? इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस कर दिया आपने, रिमूव कर दिया कंपल्सरी ट्रांसफर सर्विस. ठीक है. हु इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड और कंटिन्यू टू बी अंडर सस्पेंशन द डेट ऑफ सच डिसमिसल और रिमूवल ऑफ कमेंट and fails to produce a certificate of non-employment, and who fails to produce a certificate of non-employment shall be entitled to. and कहता है कि and who fails, he shall be entitled to substitute allowance from the date of order of dismissal, removal equal to the amount by which his earnings, any, during such period fall short of the amount of allowance that would otherwise be to him. His earnings are equal to more than anything. क्या उसको करता है क्या? The case of government servant is case of government servant of servant from service who deemed to have been, कि कोई बंदा जो है इसमें से रिमूव या कंपल्सरी रिटायर कर जाता है सर्विस से, who is deemed to have been placed or continue to be under suspension, who is deemed to have been placed or continue to be under suspension. माना जाता है कि भाई जो डिस्मिस हो गया खत्म हो जाए ना, सारा केस ही खत्म हो गया. to have been placed or continue under suspension date of such dismissal, and who fails to produce certificate of non-employment, uh, fails certificate of non-employment, he shall be entitled and to allowance from
Out of dismissal equal to the amount by which his earnings, if any, during the court that would otherwise be him if his earnings are equal to not be paid anything. If we are court, this will be done retrospective from the payment and of limited. मतलब जो भी बंदा है जिसको डिसमिस किया जाता है वो फेल हो जाता है कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट देने में, सर्टिफिकेट ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट, he shall be entitled to certificate of dismissal equal to the amount by which he is earning, if any, during his fall short of the amount of current bid. I need to read this again. मैंने इस पर रीड अगेन लिख लिया यार, एक लास्ट ट्राई देना चाहेंगे इसको. डीम्ड सस्पेंशन आफ्टर डिसमिसल, और डिसमिस के अगर किसी को कर दी कह रहा है इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, ठीक है, हु इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड. अच्छा, तो आपने डीम्ड सस्पेंशन करके मान रखा था मान लीजिए पहले, ठीक है, आपने डीम्ड सस्पेंशन था उसको आपने रिमूव कर दिया कंपल्सरी, ठीक है, और कंटिन्यू टू बी अंडर सस्पेंशन डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ सच और रिमूवल और कंपल्सरी, ठीक है, मान लीजिए कोई बंदा ऐसे सस्पेंशन माना गया आपने, ठीक है, डीम्ड सस्पेंशन था ना, तो अंडर सस्पेंशन है, have been placed, seem to have been placed or continue to be under suspension. केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट तो कंपल्सरी फ्रॉम सर्विस, ठीक है, बंदा जो है गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है रिमूव रहता है सर्विस, हु सीम टू हैव बीन प्लेस्ड और कंटिन्यू टू बी अंडर सस्पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल के बाद भी उसको मान रहे हैं, हु इज डीम्ड हैव बीन प्लेस्ड कि उसको जो है अब हमने मान रहे हैं ओके टू कंटिन्यू अंडर सस्पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल एंड हु फेल्स टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और जो है क्या है who fail होगा ये to produce a certificate of non-employment fails to employment, he shall not be entitled, he shall be entitled to certificate of order of dismissal equal to the amount by which his earnings fall short of the amount of such funds that would otherwise be admissible. Payment of DNS बनाता है as a government DNS paid to him from time to time, कहता है a DNS government servant and is entitled to draw DNS allowance, देगा उसको the basis allowance paid to him from time to time. लेकिन अगर हमें पहले अगर हमें याद तो ये कह रहे थे कि है ये नहीं मिलेगा, रूल तो हमारा यही कह रहा था यार, अब देख लो सस्पेंड के अंदर पेनल्टी क्या होगा.
यार ये तो नहीं दिखा रहा है इसके अंदर, बट चलिए हम ये मान लेते हैं कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ डियरनेस अलाउंस, तो डी मिलता है यार, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडेंस अलाउंस पेड टू हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। और पेमेंट ऑफ इंटरिम रिलीफ, गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इंटरिम रिलीफ, तो मिल जाता है यार, यस, entitled to draw interim relief on the basis of allowance paid to him from time to time. Payment to compensatory allowances, the draw of house rent allowance to a government servant regulated with 53, the basis of which he was in receipt that was in receipt of the date of suspension, furnishing either or both of certificate for drawal of allowances for periods beyond 4 months from the days from the date the headquarters of the government to allow at the new station further the request with the new station. ठीक है, पेमेंट ऑफ compensation allowance, the drawal of the house rent allowance, बोलते हैं the drawal of house rent allowance to a government service to be regulated with reference to FR 53 on the basis of pay on which he was in receipt on the date of suspension. Uh, the drawal of house rent allowance to a government servant shall be regulated with reference to 153 or on the basis of pay of which he was in receipt on the date of suspension, subject to his furnishing either in both of his certificates prescribed for drawal of allowances for periods beyond the subject to his furnishing either or both of certificates prescribed for drawal of allowances for periods beyond 4 months. If the headquarters of the government servant entitled to allow to allowance as admissible, provided he non-employment certificate. A government servant non-employment certificate क्या कहता है? A government servant under suspension continues to be governed by the cannot therefore for supplementing his engage himself in an employment business profession without prior permission. Payment of such allowance is the government that furnishes pay expected every month. The fact that he was not engaged in any does not तो है यहाँ पर क्या कहता है अब ये देखिए, इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस is deemed to have been placed or continue to be under suspension from the date of dismissal or removal of compulsory retirement, deemed to have been placed or the date on the date non implement a government servant जो है under governed by the cannot therefore preventing his therefore engage himself in any employment business professional without the prior the payment of such allowance is the government servant and in the prescribed format everyone है तो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्विस उसको क्या क्वेश्चन नॉन सफिशिएंट जो है इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू हैव टेकन दिस
Okay. And who fits the initial content to content from the date of ये कह रहा है यहाँ पर कि केस में जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो इसमें से रिमूव हो जाता है या फिर कंपल्सरी रिटायर किया जाता है सर्विस से, ठीक है, तो उसको हु इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड कंटिन्यू टू बी अंडर सस्पेंशन डेट ऑफ सच एंड वो जो है अभी भी है, मतलब इसको डिसमिस किया जाता है, हु इज कंटिन्यू नो एंड हु इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड सस्पेंशन कंटिन्यू द डेट ऑफ fails to produce नहीं दे पाता मान and for equal to the amount by which the offence is any during such period falls short. The payment of compensation allowances, the role of house rent दिए तो मिलेगा ना, the role of assistant allowance में क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं यार. मैंने फिर from he is entitled to certain allowance that 50% of basic pay which he was entitled to immediate proceed and then after it may be an extra 75% if the delay is not directly attributable to them. 50% और बढ़ सकती है ना उससे percent of his basic ये होता है. The role of HR government servant regular होता है यार, है ना, होता है role of HR government by this on the basis of pay on the basis of pay of which he was in receipt of the date of suspension. The basis of pay of which he was in receipt and date of suspension. The furnishing either or both of from the role of allowances beyond beyond 4 months. Okay. पेमेंट सर्टिफिकेट भी हो गया, ठीक है. देन वह डिनाइल ऑफ सब्सिडेंस, डिनाइल भी क्या हो सकता है. ओके, whether the department of citizen allowance cannot be denied on any grounds except, okay, it can be denied except when the government servant जो है under suspension is unable to or does not furnish the certificate referred to above. And when the except cannot be denied on any grounds except when the government servant under suspension is unable to does not furnish the certificate referred to above. By its very nature, such an allowance is meant for the subsistence of a suspended government servant and his family during the to perform duty and thereby earn a salary. It has been observed that where a government servant under period his inability to attend the while on account of financial caused by the non-payment of such allowance to him, the ex parte would be in violation of the opportunity. It is enjoined that all concerned authorities should
prompt steps to ensure that इफेक्टिंग ऑफ रिकवरीज, तो सिर्फ अगर सर्टिफिकेट नहीं देगा तो ही उसको वो जो है पैसे नहीं मिलेगा. इफेक्टिंग ऑफ रिकवरी, दी कंपल्सरी फॉलोइंग कंपल्सरी डिडक्शन शुड बी एनफोर्स्ड फ्रॉम द सब्सिडी अलाउंस. कंपल्सरी जो है डिडक्शन शुड बी एनफोर्स्ड फ्रॉम द इनकम टैक्स प्रोवाइड द एम्प्लॉइज ईयरली इनकम कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू इज फ्लेक्सिबल. इनकम टैक्स ओके. Then house rent and allied charges, that is electricity, water, furniture, etc. Repayment of loan and advances taken from the government at enforced. Following compulsory deductions should be enforced. CGHS contribution, then contribution towards insurance schemes is the central government employee group insurance. ये कंपल्सरी डिडक्शन है, ये लेंगे. CGHS contribution देना पड़ेगा, contribution towards CGEIGS, ठीक है, CGEIS, ठीक है, subscription to central government employee group insurance scheme, okay, repayment of loans or advances taken from government by the company, okay, पड़ेगा. हाउस रेंट एंड अलाइड चार्जेस खुद देना पड़ेगा. इनकम टैक्स एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड, यहाँ पर एनफोर्स बाध्य होंगे इस पर. obey a loan, whatever something they और द फॉलोइंग, और कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, कुछ कंपल्सरी डिडक्शन should option है, but should not be made except with the return consider the premium due on post life insurance. आपका प्रीमिया है, premium due on post life insurance policies. Then we have amount due to cooperative stores and refund of advances taken from if not be made from in the following deductions जो है, following deductions should not be made. Subscription to GPF, subscription to GPF or amount due on court attachments. थर्ड है आपका रिकवरी टू लॉस, लॉस टू गवर्नमेंट फॉर विच गवर्नमेंट सर्वेंट should not be made. Recovery of loss to government for important है. As regards the recovery of overpayment, there is no bar in affecting it. अच्छा, regards the recovery of overpayment, there is no bar in affecting it. overpayment रहती है तो वो कर सकते हैं. However, while doing so, the government authority should exercise discretion in deciding recovery should be held wholly in abeyance and it should be effected at a rate not exceeding 1/3 of an allowance only. ठीक है, तो competent authority should exercise discretion and decide whether the recovery should be held wholly in abeyance or should it be effected or at a rate in 1/3. करेंगे उसमें डी एन तो मिलेगा ना. अब बात करते हैं लाइसेंस फी फ्री कंसेशन. आपका the government surrender system will not be required to vacate license fee free accommodation. Okay, license fee free accommodation unless the accommodation is specifically attached to any particular post. However, license fee free concession will cease from the date of suspension and rent will be recovered from him as if he was not in office. For the purpose of recovery of emoluments will be taken as laid in justice. The government servant under suspension will be required to vacate license fee. कोई भी अगर पर्सन है जो अंडर सस्पेंशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू
will not be required to vacate license fee free accommodation unless the accommodation is specifically attached to a particular post. ठीक है, the accommodation is specifically attached to any particular post. However, the license fee free concession जो है will cease from the date of suspension. License fee free concession जो है will cease from the date of suspension and rent will be recovered from him. Will not be required to vacate license fee. However, license fee जो है free concession जो है license fee free concession will cease from the date of suspension and जो rent जो है ना उनका that will be recovered from him as if he was not in occupation of license fee free accommodation. कुछ license fee free accommodation for what is license fee free and what is license fee for central government quarter? हाँ सबका तो लगता है लाइसेंस फी फ्री अकोमोडेशन कौन सी होती है लाइसेंस फी नहीं पता यार लाइसेंस फी गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू वेकेट लाइसेंस फी कुछ मिलता होगा जिनको जैसे लाइसेंस फी फ्री अकोमोडेशन मिलती है ठीक है तो अगर अंडर सस्पेंशन है तो वो उसको विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू वेकेट दैट अनलेस द अकोमोडेशन स्पेसिफिकली अटैच टू एनी पर्टिकुलर पोस्ट ठीक है अगर वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट से अटैच है तो आपको खाली करना पड़ेगा ये ठीक है तो बोलता है हाउएवर द लाइसेंस फी फ्री अकोमोडेशन विल सीज फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन जैसे आप डेट सस्पेंड होते हैं तो लाइसेंस फ्री फ्री कंसेशन जो है आपको वो सील टू एग्जिस्ट एंड रेंट विल बी रिकॉर्ड फ्रॉम हिम एज इफ ही वाज नॉट इन ऑक्यूपेशनल लाइसेंस फी ठीक है इफ सब्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन फुल pay and losses the concession of license fee for accommodation will stand restored and the rent if any recovered for the period of suspension will be refunded to him अगर सस्पेंशन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड फॉर द पीरियड अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है इफ इज अलाउड फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन फुल पे ठीक है एंड अलाउंसेज the concession of license fee free accommodation will stand restored ठीक है and the rent if any record for the period of suspension will be refunded to him ठीक है the period of suspension is treated as one spent on leave अगर जो पीरियड जो है the period of suspension जो है is treated as one spent on leave the refund will be for the first month only for the period beyond the first month recovery will be prescribed for beyond the first month rent recovery will be prescribed. If such a government servant is made to vacate the license fee free accommodation, either because it is specifically attached to a particular post or for any other reason, he will not be allowed to draw house rent allowance. बोलता है if such a government servant is made to vacate license fee free accommodation, made to vacate उसको बोला है is made to vacate license free accommodation either because it is specifically attached to a particular post or any for any reason, he will not be allowed. ठीक है उस केस में इसको he will not be allowed to draw house rent allowance in lieu of license fee accommodation. But if his headquarters at the time of suspension is at a place where which is classified city or a hill station at which rent allowance is admissible, then he will be allowed the same subject to usual condition. The house rent allowance will be calculated with reference to pay that he was drawing at the time of suspension. With reference to the pay that he was drawing at the time. ये important है यार. Extension of temporary post. When a government servant holding temporary post is suspended and the sanction of such temporary post expires, permission जो expires before the disciplinary proceedings are completed, it may be considered on merit whether he should be discharged from service on the expiry post by him or his services terminated. Continue to the logical conclusion. If it is decided to continue disciplinary proceedings, the post in question may be extended under the orders of the competent authority
If delay is anticipated in obtaining such sanction, the command authority dismiss or remove the officer concerned from service may issue order extending the post without reference to the authority coming to sanction the action post. ठीक है? Further, when a government servant holding temporary post is suspended and the sanction of such temporary post expires, और जो sanction जो है ना उसकी such temporary post expires, ठीक है? Before the decision proceedings are completed. तो इस केस में क्या करेंगे? It may be considered on merits. It should be considered on merits. तो आप consider करेंगे इसको. And whether he should be discharged from service on the expiry of the term held by him or his services, whether he should be discharged or his services जो हैं terminated under rule this or the decision doesn't continue to the logical condition. Service terminated or the disciplinary proceedings जो हैं that to be continued to the logical conclusion क्या होगा, ठीक है? If it is decided to continue disciplinary proceedings, the post in question may be extended. तो जो post जो है, the post in question may be extended under the orders of the competent authority if delay is anticipated. If delay is anticipated in obtaining such sanction, the authority competent to dismiss or remove the officer concerned from service may issue orders extending the post without reference to the authority competent to sanction the. Okay? Substitute arrangement. But then in national where provision for leave reserve list, any vacancy caused on account of suspension, government servant should be filled by a reservist, and where a reservist is not available, the post should be filled by an officiating appointment. It is not necessary to create an extra post. Substitute arrangement. Even in a national where provision for leave reserve exists, there is a provision for leave reserve exists. Any vacancy caused on account of suspension should be filled by a. So any vacancy caused by on account of suspension should be filled by a reservist. If the reservist is not available, the post should be filled by an official appointment. Okay, and it is not necessary to create an extra post. Revision of scale of pay. When the scale of pay of a post held by a government servant under suspension is revised, when the scale of pay of a post held by government servant under suspension is revised with effect from the date prior to the date of suspension, he should be allowed to exercise the option of Part 23 even if the date by which he is to exercise the option falls within the period of suspension. He is entitled to benefit to increase in pay, if any, in respect of the period before suspension, also in the substance allowance considered on this. ठीक है? जब भी जो है when the scale of pay of a post held by government servant under suspension is revised, this scale of pay revised किया with effect from date prior to the date of suspension. He should be allowed. He should be allowed to exercise the option and this even if the date by which he is able to exercise falls under the period of suspension. The date by which he is to exercise for suspension, he is entitled to benefit. If the revision of the pay takes from the date of falling during the period of suspension, a government servant who retains a lien or a suspended lien on a suspended post should also be allowed to exercise the option under suspension. The benefit of option will, however, accrue to him in respect of period of suspension only after reinstatement, depending upon the fact whether the period of suspension is treated as duty or not. Okay? The benefit of option that will, however, accrue to him in respect of period of suspension only after duty है नहीं. A government servant who does not retain a lien on the post and the pay of which is changed is not entitled to exercise the option. A person कहते हैं a government servant who does not retain a lien, okay, on post the pay of which is changed is not entitled to exercise the option for this. However, if he is reinstalled in the post and period of suspension is treated as duty, he may be allowed to exercise the option after reinstatement. In such a case, if there is a time limit prescribed for exercising the option and if such limit has only expired before reinstatement, relaxation may be made in each individual case extending the period of exercising the option. In such a case, ये नहीं आया.
ठीक है, ग्रांट ऑफ एडवांस फॉर परचेज ऑफ कन्वेंस. Okay, an advance for the purchase of conveyance should not be granted. Okay, to a government servant who is under suspension, and if an advance has already been sanctioned to him, he should not be permitted to draw. So should not be granted, and if an advance जो है has been sanctioned to him, इसमें से क्या करना है, he should not be permitted to draw such advance. ठीक है, eligible for house building advance. Certain government servants who are placed in suspension are also eligible for. Okay, they are eligible for grant of house building advances, and payment can be made to them by head of department, subject to condition that collateral condition क्या है, subject to the condition that collateral security in the shape of mortgage bond from the two permanent government servants is obtained. That condition there is में आपको collateral security in the shape of mortgage bond from two permanent government servants is obtained. In the event of default or delayed payment or necessary money being available for foreclosure itself, the shortage of recovery may be made by collateral security. Shortage of recovery जो है may be made by collateral security. Functioning as a defense assistant. Merely because an official is under suspension does not mean that he has ceased to be a government servant. Hence, an official under suspension has the full right to function as a defense assistant. वो defense assistant जो है काम कर सकते हैं. Has the full right to function as a defense assistant in disciplinary proceedings, and there is no rule that such person is not entitled to assist another person in inquiry proceedings. And there is no rule that such person is not, and there is no rule that such person is not entitled to assist another government servant in inquiry proceedings. And traveling allowance entitled. So the government servant under suspension, when required to perform a journey to attend the inquiry, may be allowed for traveling allowance. Okay, then he may government servant suspension when required to perform journey to attend the inquiry may be allowed traveling allowance उनको दे दिया जाएगा. ठीक है, as far as for a journey on tour from his headquarters to the place where the department is held, and from the place at which he has been permitted to reside, and during suspension the place of inquiry visited was. His traveling allowance will be regulated with reference to the grade to which he belongs. The traveling allowance will be regulated with reference to the grade which he belonged to prior to suspension. He may be paid traveling allowance advance on actual fare and daily allowance. He may be paid traveling allowance advance of actual fare and daily allowance admissible for the period of journey and for the specific period of inquiry. Children education assistance. A government servant under suspension eligible for a grant of ये तो मिलेगा. ठीक है, eligible for grant of children education allowance, subsidy or purchase of book or hotel subsidy if otherwise admissible. LTC, a government servant is not himself बोला गया. Okay, is not himself eligible to avail LTC, but his family की बात करें, his family can avail of, but his family however can avail of LTC independently of him. LTC advance for the purpose may be granted subject to fulfillment all other than writing of confidential reports by officer under suspension. No officer under suspension should be allowed to write. देखिए कोई भी जो officer है, no officer under suspension should allow to write review the ACR है ना, office subordinates. During the major part of the writing, reviewing he is under suspension as he might not have full opportunity to supervisor नहीं दिया जाएगा. राइट, तो विद दिस हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्लीट होता है, suspension. With this, thank you so much, and we will be meeting in the next video where we will be completing our chapter 3. Have a great day and keep studying.